We welcome you all on today's webinar. Our two speakers are, though they don't need an introduction, but as a protocol, Advocate SM Surana ji and Advocate Paras Kochar ji. I request now our chairman of the session, Mr. Kamal Kumar Jain, to please address the gathering. Thank you, Barka. Welcome. Good evening to all. I welcome our eminent speaker, Senior Advocate Sri Sumermalji Surana and Advocate Sri Parasji Kochar, and all my past presidents, seniors, friends, and participants who are attending this webinar. Today's topics are provisions relevant to reopening assessment, which will be dealt by Sri Sumermalji Surana, and plan your future through will succession trust dealt by Sri Parasji Kochar. 147, 148, 149 will deal by Sumermalji Sahab. The provision of section 147 empowers the assessing officer to reopen an assessment if he has reasons to believe that income has escaped assessment. The important word under section 147 are has reasons to believe, and those words are stronger than the words is satisfied. On February 5th, 2021, the 21-22 budget has lowered the time for reopening of the tax cases to 3 years from 6 years earlier. While our serious tax fraud cases involving income concealment of rupees 50 lakhs and above 10 years old cases can be reopened. Whom the property of any assets passes on the death of a person, depending on whether the deceased has made a will or has died intestate without leaving any will in respect of assets concerned. In case a person dies without leaving a valid will, all the assets pass on his legal heirs immediately on the date of his death, as per succession law applicable to him. In case the deceased has made a valid will, the executor have to ensure that the property gets transferred in the name of legatee as per the wishes of the testator. Both the speakers will share their views to enrich our knowledge. Thank you. Over to Barkha. Thank you, Chairman sir. Now I request, without wasting any time, we should start the session. So I'm requesting now Manjulata Adi to please introduce our first speaker of the day, Mr. Surana ji. First of all, I am greeting everybody, Mr. Paras Kochar and Mr. Surana ji and other seniors for the webinar. पहले मेरा आप नमस्कार ले लीजिए सभी लोग, सभी बड़ों को. Now I would start for the introduction of Mr. Surana ji. Advocate Mr. SM Surana is an advocate since the year 1967. He basically practiced before the Income Tax Appellate Tribunal. Regarding the matters, he has appeared before the various benches in the country, such as Kolkata, Bangalore, Chennai, Cuttack, Ranchi, Delhi, and Mumbai. He was elected as a president of Income Tax Bar Association, Kolkata, in the year 2004 and 6, and again for the continuous 2 terms, 2014 and 16, and 2016 and 18. He was nominated as a chairman of the disciplinary committee of the Bar Council of West Bengal, constituted under the Advocates Act for the first time in the year 2008 and 10, and was renominated for the second term for the year 2010 and 12, and again for the third time 2012 and 14. He was facilitated by the Bar Council of West Bengal in the function organized by the Bar Councils in Town Hall in the presence of Law Minister Mrs. Chandrima Bhattacharya, Chairman of the Bar Council of the West Bengal,
and Advocate General of West Bengal, it may be noted that the disciplinary committee is the only authority to take disciplinary action against the rules and regulations of the advocate. Rather than this brief profile given for the advocate S.M. Surana, what we all know that he's a pillars of the profession, and we all are every day getting enriched by his knowledge. Uncle, I humbly request you and welcome you for the webinar. Thank you, Manjudi. I'm Now handing over the proceedings to Barkha for the continuation. Thank you, Manjudi. Now I request Mrs. Neha Agarwal to please present the virtual flower bouquet to our first speaker, Mr. Surana ji. We welcome you, sir. Sir, the proceeding is over to you, sir. You can start. Surana, sir. Thank you very much for the bouquet. Welcome, sir. Good afternoon to everybody. Honorable President of DTPA, other office bearers, my co-speaker, Shri Paras ji, Shri KP Khandelwal ji, and other brothers and sisters. मुझे जो टॉपिक दिया गया है उसका नाम है न्यू प्रोविजंस रिलेटिंग टू रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट. अगर हम न्यू प्रोविजंस में जाएंगे तो इसका मतलब है हमको थोड़ा ओल्ड में भी झांकना पड़ेगा ताकि न्यू को समझ सकें. ये जो प्रोविजंस फॉर रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस रीओपनिंग? द हिस्ट्री इज क्वाइट ओल्ड. In India, first Income Tax Act was brought in 1918, and at that time itself there was a provision in 1918 Act that collector, who was the person who was collecting income tax, had the authority to reopen the case, but at that time it was only for 1 year. Then the provision was imported in 1922 Act, that was section 34 of the 1920 Act. उसमें ओरिजिनली 4 साल का प्रोविजन था कि 4 साल का रिओपन कर सकते हैं. Then in 1939 drastic amendment was made. It was mentioned कि भाई अगर एसएससी का फॉल्ट है तो 8 साल का रिओपन होगा, और एसएससी का फॉल्ट नहीं है, एसएससी ने सब कुछ डिस्क्लोज किया है तो 4 साल का रिओपन होगा. और उसमें काफी कुछ प्रोविजन बनाए गए थे. उस प्रोविजन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन किया इन द केस ऑफ सूरजमल मोहता, आईटीआर पेज 1 में, कि so long the stupidity of the officers will continue or the cupidity of the assessors will continue, both together, then reopening will continue. It was really interesting observation by the Supreme Court. Then 1948 again some amendment was made. उस amendment में जो आज तक चल रहा था, if there is failure on the part of the SSC to make full and true disclosure, then 8 years. Otherwise, if the SSC has fully disclosed all material facts, then 4 years. This continued for about 8 years. Then 1956 आया तो उसमें 8 को 16 साल कर दिया. फिर 68 में again 16 को 8 कर दिया. Government thought how long will continue with the litigations. Then finally the entire Income Tax Act was drastically amended with effect from 1/4/89. उस एक्ट में एक नया प्रोविजन लाने वाले थे. It was proposed by the finance minister then that the word reason to believe should be taken out and only the word in the opinion of the assessing officer should be brought in. लेकिन उस टाइम सेफ गार्ड ये था कि कोई भी एक्ट अमेंडमेंट होता था, कुछ भी होता था तो सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता था. It was rather compulsory at that time. Matter went to select committee. Select committee persuaded that की opinion में तो assessing officer कभी भी किसी को भी reopen कर देगा, unnecessary litigation will start. Nothing should be based on the personal opinion. And काफी मशक्कत के बाद में और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेशन के बाद में the word reason to believe
was again brought in, and that section 147 continued till the recent amendments from 1/4/2021. उस 147 में कई वर्ड्स बड़े रिमार्केबल थे. One was that reason to believe continued. Reason to believe that any income chargeable to tax has escaped assessment. इसके अलावा any other income which can be assessed, which comes to the notice of the assessing officer in the course of the proceedings under section 147. लेकिन उसमें एक राइडर पीछे लगा दिया गया था कि also any other income which comes to his notice. और उसमें वो राइडर भी था कि अगर साहब 4 साल का रीओपन नहीं हो सकता 4 साल के बाद में, देयर वाज फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर बाय द एसएससी. उसमें ये राइडर भी था कि अगर एसएससी के सामने आप बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस कर देते हैं आईटीओ के सामने, फ्रॉम विच आईटीओ कुड हैव डिस्कवर्ड द कंसीलमेंट, दैट इज नॉट एनफ. यू हैव टू फुल्ली एंड ट्रूली डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स. अगर आपने इनकम अंडरस्टेट किया है या ज्यादा डिडक्शन ले लिया है, ज्यादा अलाउंस ले लिया है, तो भी रीओपन हो सकता था. इसके अलावा एक एक्सप्लेनेशन डाला गया और वो इतना वाइड कर दिया गया था कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड अंडर असेस्ड. सच इनकम हैज बीन असेस्ड एट टू लोअर रेट. सच इनकम हैज बीन मेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सेसिव रिलीफ एंड एक्सेसिव लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस हैव बीन ग्रांटेड. इसके अलावा ये भी था कि 133C जो इन्वेस्टिगेशन विंग बनाया था नया सेक्शन बना करके, अगर उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है देन आल्सो असेसमेंट कैन बी रीओपन्ड. लेकिन जो मूट कारण था कि रीजन टू बिलीव सब में होना चाहिए, और रीजन टू बिलीव का मतलब है देयर मस्ट बी सम टेंजिबल मटेरियल फॉर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन. इसका एक केस है जो पहला केस हुआ इसका अमेंडमेंट के लेकर के 147 के अमेंडमेंट को लेकर जो 1489 में हुआ था, वो कैलविनेटर ऑफ इंडिया का हुआ था 320 ITR पेज 561. उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने काफी लंबा जजमेंट लिखा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट रीजन टू बिलीव मींस देयर मस्ट बी सम टेंजिबल मटेरियल. द वर्ड वाज सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन वाज इंटरेस्टिंग, दैट देयर हैज टू बी सम टेंजिबल मटेरियल टू फॉर्म द reasonable belief. Without that, you cannot reopen the assessment. And you have to inquire into that tangible material. You have to apply your mind. If the ITO has not applied the mind to the information, tangible information, and has not formed the reasonable belief, then the assessment is not maintainable. अब देखिए यहाँ तक भी असेसमेंट कैंसिल हुए हैं कि जहाँ रीओपनिंग में फिगर कुछ लिखा है और अल्टीमेटली असेसमेंट में कुछ और फिगर आ रहा है. उसके लिए कई जजमेंट है, मैं एक दो जजमेंट कोट कर देता हूँ. आशियन नीडफेल्स प्राइवेट लिमिटेड 384 ITR 144 दिल्ली. RMG पॉलीमर्स 396 ITR 25. सुरेन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 357 ITR 24. इसके अलावा और भी बहुत सारे जजमेंट हैं कि साहब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बोरोड सेटिस्फेक्शन से आई है, बोरोड मींस किसी ने आदमी ने इंफॉर्मेशन भेजी और असेसिंग ऑफिसर लिख रहा है कि आई हैव रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सो एंड सो ऑफिसर एंड आई एम सैटिस्फाइड दैट द असेसमेंट हैज टू बी रीओपन्ड. ऑल दोज केसेस were accepted by all the courts that if there is no application of mind by the assessing officer, then assessment cannot be reopened. एक इंटरप्रेशन ये भी आया कि जो वर्ड ऑल्सो जो यूज किया गया था, दैट ऑल्सो एनी अदर इनकम, तो क्या वो एडिशन हो सकता है जिस एडिशन को के लिए असेसमेंट रीओपन नहीं हुआ हो? उसके लिए कोर्ट्स के जजमेंट आया कि साहब अगर आपने जिस पॉइंट को लेकर के असेसमेंट रीओपन किया है, अगर उसका आप कोई एडिशन नहीं करते हैं, देन दी रीओपनिंग इटसेल्फ फेल्स. और रीओपनिंग फेल हो जाता है तो आप दूसरा एडिशन नहीं कर सकते. ऐसा जजमेंट रेनबेक्सी लेबोरेटरी का आया था 336 ITR 136. राजस्थान हाई कोर्ट का आया था श्री राम सिंह 306 ITR 343. इसके अलावा दुनिया भर के जजमेंट है इसमें. उसमें कलकत्ता ITAT का एक जजमेंट है संजू जालान का. उसमें तो यहाँ तक था कि अगर
147 में कोई एडिशन जिसका रीजन रिकॉर्डेड है, उसका अगर एडिशन भी कर दिया गया है, लेकिन अल्टीमेटली वो एडिशन नहीं टिकता है, तो दूसरे एडिशन भी नहीं टिक सकते। तो दैट मीन्स इट वाज देयर, द वर्ड आल्सो वाज इंटरप्रेटेड बाय ऑल द कोर्ट्स। इसके अलावा इस पर भी जजमेंट आया कि साहब व्हाट इज वेदर इन द रीजन्स रिकॉर्डेड, ये बात नहीं लिखी है दैट देयर वाज no true and full disclosure even though the original assessment was completed under section 143, then assessment cannot stand. There are number of judgments in that. मैं खाली आपको एक कलकत्ता क्लब का, कलकत्ता हाईकोर्ट का बताते हूँ लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें ये लिखा है कि अगर ये वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं, अगर 143 का असेसमेंट हुआ है और ये वर्ड्स नहीं यूज किए गए हैं कि देयर वाज नो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर बाय द एसएससी, देन द असेसमेंट कैनॉट स्टैंड। अब आप देखिए, अब जो नया सेक्शन आया है 147, उसमें ये सारा चार्ज रीजन टू बिलीव को सबको खत्म कर दिया। द लैंग्वेज यूज्ड इज if any income chargeable to tax in the case of an assessee has a step assessment or any assessment, the assessing officer may subject the provisions of section 148 to 153 assess or reassess such income or recompute the loss or the depreciation allowance or any other allowance or deduction for such assessment year. अब इसमें रीजन टू बिलीव खत्म। अगर एस्केपमेंट ऑफ इनकम है, then the assessing officer can assess the income under section 147. Not only that income, in the course of assessment proceedings, if any other income comes to his notice, which has a step assessment, that can also be assessed. इसमें केस पॉइंट ये कि वर्ड also जो था दिया हुआ पुराने सेक्शन में 147 में, that also word is missing. So what will be the interpretation? Whether even though no addition is made on the issue on which the assessment was reopened, whether any addition can be made of the other income. This will be a controversial point, and controversial इसलिए भी है कि इसमें ये भी लिखा है कि साहब 148 में जो आपने सैंक्शन लिया था एक पर्टिकुलर इनकम का कि इसके लिए असेसमेंट रिओपन कर रहे हैं, इस एडिशनल इनकम को आप असेस कर रहे हैं, उसके लिए 148A will not apply. That means even if the provisions of 148A have not been complied with for the addition to be made at the time of completion of assessment, which has been reopened on any other issue, other addition can be made. However, moot question still remains. If the very basis of reopening doesn't stand, then the assessment has to be cancelled. If the assessment is to be cancelled, then how can he assess or reassess? In my opinion, there will be a good case if we argue that on the issue on which the assessment has been reopened, if on that issue no addition is made, then the reopening itself was bad in law. If the reopening is bad in law, then there is no question of making assessment on any other issue. So this is the amendment made in 1/4/2021 in section 147, which remains intact in 2022. No change in Finance Bill 2022. Now you next come to section 148. The original section was that before making the assessment or reassessment or recomputation under section 147, the assessing officer shall serve on the assessee a notice requiring to furnish within such period as may be specified in the notice a return of his income for which he is assessable in the prescribed manner and setting forth such other particulars as may be prescribed, and the provisions of this act shall so far as may apply accordingly as if the return were the return required to be furnished under section 139. अब इसको आप वापस लिंक कीजिए 147 से। 147 में एक प्रोविजन था, such income has been assessed at too low rate, पुराने सेक्शन में हमने देखा है कई बार कि किसी आदमी ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिक्लेयर कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, और बाद में डिपार्टमेंट को मिला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोगस था,
department reopened the assessment because the SSC has paid tax on short-term capital gain, and therefore that gain was assessed at too low rate because it was income from other sources or undisclosed sources. It should have been assessed at higher rate, and on that ground, the reopening was justified. Surprisingly, such income has been assessed at too low rate is missing. That means अगर हमने कोई भी income दिखा दी short term capital gain में और बाद में अगर उसको ये मालूम पड़ा कि बोगस है, can that assessment be reopened? Because in so far as income is concerned, the income is already disclosed. But tax has been paid at a lower rate. Maybe it is income from other sources. That doesn't say that income has been assessed under some other head. Therefore, whether this will fall within the parameters of section 147, whether it can be taken, such income has been made the subject matter of excessive relief. It is not relief. It is assessed at too low rate, which is missing, because it's not a case of excessive relief. It is granted when I claim the relief, and relief is granted by the AO. Therefore, in my opinion, all those cases where somebody has shown short-term capital gain and ultimately it was found that this was not short-term capital gain, but was business income or but was income from other sources, one has to see whether this assessment can be reopened. This again will create litigation. 148 में जो जैसा मैंने बताया कि 139 में one has to submit the return, and then assessing officer shall, before issuing any notice under this section, record his reasons for doing so. That recording of reasons goes here because 148A में cover हो जाएगा. But the return is to be submitted as a return required to be furnished under section 139. Whether we have to submit a fresh return, or if I write a letter to the assessing officer that my original return should be treated as return in response to notice under section 148, so long this was being accepted by all the courts, that if the SSC writes a letter that my original return to be treated as return in response to notice under section 148, that has to be accepted. Reason being, आपको मालूम है जो रूल 12A है उसमें लिखता है कि you have to submit the return in the form as prescribed under rule 12A for each assessment year. और आप अगर रूल 12A को पढ़ेंगे तो ये भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि हर साल के लिए नया फॉर्म आ रहा है. It is not that there are different forms. And for the relevant assessment year, I have submitted the form return in the relevant form. Therefore, there is no fault in submitting the return in the relevant form. And section itself says that it will be treated as if the return is filed furnished under the provisions of section 139. So I am not at fault. The issue came up for consideration before various courts. I will only quote one or two judgments. That is, one is Jai Shiv Sankar Traders Private Limited, 383 ITR page 448. That if the SSC has given a letter to treat the original return as return in response to 148, that is a valid compliance. But rule 12A was not discussed there. I argued a case before the Income Tax Tribunal, Calcutta, in the case of East India Bearing Company, where this rule 12A was also discussed. Even then, the Honorable Tribunal held that if a letter is returned, then that is sufficient compliance of the notice under section 148. This was in the context that when I gave the letter, still the department did not issue any notice under section 142 on the ground that you have not submitted the return, and therefore assessment is to be completed under section 144 after issuing 142.1. My contention altogether was that I have submitted the return by filing a letter, and whether this letter can be treated
as filing of return. The same issue was there in the Delhi High Court. In fact, Rajasthan High Court, a long back in 154 ITR, Tiwari Kanyalal has held that if the SSC submits a letter, that is sufficient compliance. So, in my opinion, this new amended section 148, that also use the same language in so far as filing of return is concerned, that is under section 139. So that plea that I can file a letter, even if notice under section 148 have been issued under the amended provisions, which is amended from 1/4/2021. However, amendment has been made in 148 from 1/4/2021 that before issuing notice under section 148, the AO has to comply with all the provisions of section 148A, and thereafter he has to issue the notice. Now, what are those provisions? We will come to those provisions later on. And the AO should have information to issue notice under section 148A as well as 148. What will be those informations? आपको मालूम है, पहले तो अगर कोई एक एंट्री ऑपरेटर स्टेटमेंट दे देता था, that statement is given before the ADIT sends a letter to the assessing officer and that was to be taken as information, उसके लिए रिओपन होता था और हम लोग उसको डिस्प्यूट करते थे कि information borrowed है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, and we used to win because the information as such cannot be relied on by the ITO unless he himself has examined the information for that. 1/4/2021 को किसमें काफी रिलीफ कर दिया गया. Relief was that only, mainly rather I will say, 2 classes of cases be treated as information. One information was that information which is flagged, kindly note down the word, information which is flagged in accordance with the risk management strategy formulated by the board. And final audit objection by Comptroller and Auditor General. So 2 things. One is information flagged in accordance with the risk management strategy formulated by the board. Second, final audit objection by Comptroller and Auditor General. और ये जो flagging of information in accordance with risk management strategy, इसके लिए आपको मालूम है पहले एक सेक्शन 136 हुआ करता था, उसमें वो इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग बनाया था, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था और उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी जाती थी. Thereafter, another section came into force, that is section 135A, कि उसमें हुआ फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और उसके लिए डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन देकर के रूल्स बनाने थे, and those rules were also published, and whatever information is collected under those notified rules, those rules were notified on 10/12/2021 in the Gazette of India. Therefore, when those informations which were to be collected by the faceless collection scheme in accordance with that notification, and that information is passed on to the risk management strategy formulated by the board, then it was treated as information. तो इसका मतलब हुआ कि सारी इंफॉर्मेशन छन के आती थी, उसके बाद में वहां जाती थी, तो असेसी को एक साई ऑफ रिलीफ था कि फालतू इंफॉर्मेशन में कोई भी असेसमेंट रीओपन नहीं होगा. मन में आया उसी टाइम आईटीओ को इंफॉर्मेशन आई, चाहे वो अगर कभी-कभी मैंने देखा है कि एडीआईटी इन्वेस्टिगेशन बोलता है ये वेरीफाइड, देयर इज नो चेंज, बट देन दे सेंड इट वेरीफाइड फ्रॉम द रिटर्न, उसको भी रीओपन कर देते हैं. I have seen in a number of cases that the SSC has disclosed income and the ADIT found some information and he is called the SSC to make the explanation. SSC explained that this is the income which I have already disclosed, and in matter of rule this information is passed on to the AO.
Even on that information, assessment was reopened. But if the information is flagged, that means somebody is responsible. He has verified it, inquired it, and then he has to give his information correctly, that this information is worth taking note of. Second था final audit objection. आप जानते हैं दो ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट और रेवेन्यू ऑडिट. Internal audit means the audit by the officers of the department. Revenue audit means audit conducted by the officers of Comptroller and Auditor General. तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर्स का है, दैट मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटरनल ऑडिट में है, तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे असेसमेंट रीओपन नहीं हो सकता था. अगर ऑडिट ऑब्जेक्शन जिसको ये कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की जो अपने बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट, इसको जनरली ये लोग रेवेन्यू ऑडिट बोलते हैं, दैट मीन्स ऑडिट ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. उनकी अगर कोई भी रेवेन्यू ऑडिट ऑब्जेक्शन है, उस बेसिस पे भी नहीं होगा unless the final audit objection is there. That means at each stage of their department, the audit objection have been verified, and ultimately they found that yes, this audit objection is maintainable. और ये ऑडिट ऑब्जेक्शन मेंटेन करने के लिए डिपार्टमेंट में एक सिस्टम है, पहले आईटीओ से कॉल फॉर करते हैं कि दिस इज द ऑडिट ऑब्जेक्शन, यू व्हाट यू से, व्हाट इज योर ओपिनियन. If the assessing officer says I disagree, this objection is not maintainable, it goes through the principal commissioner or commissioner to the audit department. They may accept, they may reject, but if they accept it, they have to give reasons for that. So ये भी एक साइड ऑफ रिलीफ था कि साहब इतना लंबा चौड़ा काम तो होना नहीं है, तो रीओपनिंग काफी कम हो जाएगी. And everybody was happy with that. Apart from these two information, कुछ और भी था जिसको बिना कुछ बोले ही इंफॉर्मेशन ट्रीट किया जाता था. दैट इज अगर किसी के यहाँ सर्च हो गई है तो फाइन. अगर 1 अप्रैल 2021 के बाद में सर्च हुई है तो दैट इज इंफॉर्मेशन, द असेसमेंट इज टू बी रीओपन फॉर 3 years. अगर सर्वे हुई है अदर देन द सर्वे अंडर सेक्शन 133A(2)A, दैट मींस टीडीएस का सर्वे है तो आपका असेसमेंट रीओपन नहीं होगा. और 132A के अलावा 133A(5) में अगर सर्वे होता है, दैट इज अगर कोई इवेंट में अगर कोई सर्वे होता है तो उसमें भी असेसमेंट रीओपन नहीं होगा, बाकी में असेसमेंट में रीओपन होगा. और 150C का प्रोविजन ले आए वापस कि अगर एओ के पास इंफॉर्मेशन है कि किसी तीसरे आदमी के सर्च में आपका कोई पेपर मिला है जो आपसे पर्टेन करता है, आपसे रिलेट भी करता है, उस केस में भी इंफॉर्मेशन है, सेपरेट इंफॉर्मेशन की दरकार नहीं. दैट इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट, बट दिस इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल फॉर 3 years ओनली. इस आप 3 साल के लिए आप असेसमेंट उसका रीओपन ऑटोमेटिक कर सकते हैं इन केसेज में जिसमें सर्च हुई है, जिसमें सर्वे हुई है, या जिसमें किसी तीसरे आदमी के सर्च सर्वे में आपके पेपर मिले हैं, तो उसमें 3 साल के लिए आपकी इंफॉर्मेशन को नहीं इंफॉर्मेशन माना जाएगा कि ये 148 में इंफॉर्मेशन है. अब 148 को अमेंडमेंट कर दिया गया है. 148 को अमेंडमेंट किया गया है बाय सेइंग दैट कि साहब 148 में आपको जो पीसीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था बिफोर इश्यू ऑफ 148 नोटिस टू द एसएससी, उस अप्रूवल की दरकार नहीं पड़ेगी, क्योंकि अप्रूवल आपने 148A(D) में ऑलरेडी ले लिया है. मैं 148 में ए में अभी आऊंगा, देन वी विल डिस्कस कि चूंकि आपने अप्रूवल ऑलरेडी 148A(D) में ले लिया है तो आपको सेपरेट अप्रूवल की दरकार नहीं पड़ेगी. इसके अलावा जो मोटे अमेंडमेंट किए गए हैं जिससे लिटिगेशन भरमार बढ़ेंगे, एचओडी प्रोफेशनल आदमी को तो ठीक ही है, लेकिन एसएससी को बहुत तकलीफ होगी. हम लोगों को भी तकलीफ हो रही है कि क्यों एसएससी को तकलीफ दी जाए. फ्लैग्ड वर्ड को हटा दिया. फ्लैग्ड वर्ड हटाने का मतलब है कि अब नाउ डिपार्टमेंट की जो रिस्क मैनेजमेंट
स्ट्रेटेजी है, उसमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आ गई और फॉरवर्ड कर दी तो दैट विल बी ट्रीटेड एज इंफॉर्मेशन. That means any information sent by ADIT or by any other wing put in the portal of the CBDT, that becomes information. उससे भी ज्यादा डेंजरस ये कर दिया है. ऑडिट ऑब्जेक्शन की जो बात लिमिटेड थी उसमें ये किया है, any audit objection to the effect that the assessment in the case of the SSC for the relevant assessment has not been made in accordance with the provisions of the Act. Any audit objection. इसका मतलब हुआ भाई साहब की जहाँ वो इंस्पेक्टर जाते हैं ऑडिट करने के लिए और उन्होंने भी ऑडिट ऑब्जेक्शन डाल दिया तो दैट विल बी एन इंफॉर्मेशन. और वो इंफॉर्मेशन अगर है तो ओनली गॉड विल सेव द एसएससी. अब इसमें वो फेसलेस रिजम है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. लेट मी फ्रेंकली टेल that audit is not faceless. Once the assessment is completed, the entire assessment records goes to the jurisdictional assessing officer and the audit will be conducted there. And if there is any audit objection, then the SSC will be called, the SSC's lawyer will be called, that this is the audit objection. You make your submission. If this audit objection is maintainable and you are again in the clutches of the jurisdictional officer, whether the audit objection is maintainable or not. ये तो हो गया. इंटरनल ऑडिट भी है, वो भी ऑब्जेक्शन अगर कर देती है तो रीओपन हो जाएगा. और अगर रेवेन्यू ऑडिट ऑब्जेक्शन है वो भी नहीं होगा जुरिस्डिक्शनल लेवल के पास. उसमें भी ये कुछ नहीं है कि जुरिस्डिक्शनल लेवल के पास नहीं होगा. तो वो ऑडिट ऑब्जेक्शन भी अगर कुछ हुआ है which may not be available in the assessment records because faceless में हो सकता है सारे वो रिपोर्ट्स रहे या नहीं रहे, पोर्टल में कोई देखे नहीं देखे. You have to again go and explain that this audit objection is not maintainable. If the audit objection is not maintainable, then only you can save the reopening. Otherwise, it will be difficult. And I find that wherever there is any audit, generally in all the cases there is audit objection. So that will create lot of litigations. इसके अलावा अगर कोई भी एग्रीमेंट डीटी डबल टैक्सेशन एवोइडेंस एग्रीमेंट की इंफॉर्मेशन है, अब उसमें ये नहीं है कि वो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट की इंफॉर्मेशन में कुछ कंसीलमेंट है या नहीं है, इनकम एस्केप की या नहीं की. डीटी एग्रीमेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन मिली है, वो भी इंफॉर्मेशन है. मेरे समझ में नहीं आएगा डीटी एक एग्रीमेंट मिला है, वो इंफॉर्मेशन कैसे होगी, उस इंफॉर्मेशन से क्या निगरानी है. But that has been included in the word information. Third किया है कि any information made available to the assessing officer under the scheme notified under section 135A. वो जो मैं आपको बताता हूँ flagged information 135A में जो faceless information आ रही है, जो faceless information कलेक्ट की जा रही है, वो information भी अब information मानी जाएगी for the purpose of section 148. अब इसका तो हम कुछ डिफेंस भी नहीं कर सकते. अगर कोई भी information faceless ने मानी है और वो मांगी है, हमने फेसलेस वाले को दे दी सारी इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन दे दिया, हाउ फार इज सेटिस्फाइड वी डू नॉट नो. एंड वी कैन नॉट आस्क वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर दिस बिकॉज ओनली इंफॉर्मेशन इज बीइंग शोन. वो इंफॉर्मेशन जब भी आ गई, आप समझिए आजकल जो 131A के नोटिस आते हैं इन्वेस्टिगेशन विंग से हैं, जिस दिन ये डिपार्टमेंट शुरू होगा इन्वेस्टिगेशन विंग से तो नोटिस आने बंद हो जाएंगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन सब मांगी जाएगी. वो इंफॉर्मेशन आने का मतलब है दिस विल बी फॉरवर्डेड टू रेओ. ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन बाउंड टू गो टू रेओ एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ रीओपनिंग असेसमेंट. अगर कोई भी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, पहले यह था कि ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर दिया है, ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि साहब दिस पर्टिकुलर एडिशन अंडर सेक्शन 68 is not maintainable in this year because no money was received in this year. This was simply an observation of the tribunal while deleting the edition. Now from that order, this thing comes out that section 68 can be applied in the earlier year. And this information is in consequence of the order of the tribunal. तो इसका मतलब हुआ कि वो भी that will also be treated as information.
or on that basis assessment can be reopened. अब इसमें एक और केस पॉइंट किया है, उसमें जो 3 years था सर्च सीजर के लिए लिखा हुआ, उसको 3 years को हटा दिया. In search and seizure cases, information will be there even for 10 years. That means 148 में जो इंफॉर्मेशन में इंक्लूड किया 3 years खाली फॉर सर्च एंड सीजर को, उस सर्च एंड सीजर को 10 साल में इंक्लूड कर दिया. दिस इज आल्सो इंफॉर्मेशन. दैट मींस प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148 विल नॉट अप्लाई देयर. कि साहब ये पेपर मिला है एंड आई एम सेटिस्फाइड, ये पेपर सजेस्ट कर रहे हैं कि इनकी इनकम एस्केप हुई है, उसके बाद में आप एक्सप्लेन करो एंड यू डू एवरीथिंग. नाउ दैट particular clause which gave the time of 3 years for 3 assessment year immediately preceding the assessment related to the previous year in which the search was conducted, that those words have been taken out and only the word where has been used as if कि साहब where यूज किया हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये क्या अमेंडमेंट किया है. Where a search is initiated, it is enough that the information is there. So this is very, very dangerous amendment. Otherwise, the AO was bound to look into the search records. और वो जो आपका इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल वाला जो किस्सा था ना, वो कि साहब सर्च में मेरे को ये मिला है इसलिए रीओपन कर रहा हूँ, इसलिए 153 ये कर रहा हूँ, वो उसका बेनिफिट हमको मिलता कि 3 साल के बाद में तुम कर रहे हो, रीजंस रिकॉर्ड करो, तुमको क्या इंफॉर्मेशन मिली है, उसके बाद में 153 इश्यू करो. That is gone. If that is gone, then in search cases, always it will be treated as if there is information, और इस information से क्या dangerous consequence होंगे, that will come in section 148A. अब साहब 148A ये लोग लाए 1/4/2021 से. The first point 148A1 में कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को मिली है, अब यहाँ वर्ड इंफॉर्मेशन था, माइंड इट. इंफॉर्मेशन मीन्स फ्लैग्ड इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द फाइनल ऑडिट ऑब्जेक्शन ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल. विश्वनाथ जी अकेले अकेले खा रहे हैं क्या अमीर वासिया? विश्वनाथ जी अमीर वासिया अकेले अकेले खा रहे हैं क्या? आज कल एक कोर्ट ने एक पुलिस ऑफिसर को देखा कि वो कोको कोला पी रहा है, तो कोर्ट ने मालूम आपको क्या आदेश दिया कि या तो आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, नहीं तो आप 100 लॉयर्स को जो बार एसोसिएशन में है उनको कोको कोला पिलाइए, तो आप पर वो लागू हो जाएगा. Anyway, in a lighter mood, I am telling, don't mind. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि 148 ए छोटा ए रोमन ए छोटा वाला ए, उसमें यह था कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आई है तो he will conduct an inquiry with prior approval of the specified authority. Specified authority कौन है वो अपने आगे जाके डील करेंगे. तो इंफॉर्मेशन आई है वो फ्लैग्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी या फाइनल ऑडिट ऑब्जेक्शन होना चाहिए था कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का. अब लेकिन वो एक्सपांड कर दिया गया. तो दैट मींस 148A1 में 148A छोटा ए में असेसिंग ऑफिसर चाहे तो इंक्वायरी कर सकता है, बट देन ही हैज टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम हिज स्पेसिफाइड अथॉरिटी बिफोर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148. फिर भी उसको आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देनी पड़ेगी 148AB में. 148AB था कि साहब आपको वो एक शो कॉज नोटिस देगा on the basis of the information. Now that information need not show the statement of income. That information need not confirm that there was a statement of income. The information should only suggest
तो सजेस्ट का मतलब है ओपिनियन हो गया कि किसी ने ओपिनियन दी कि साहब ये इंफॉर्मेशन है, आपका इनकम एस्केप किया है, एंड दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू द AO. Now this has been forwarded to the assessing officer, giving an opportunity which suggests that there is escapement of income. Now here the work of the lawyer starts. How to reply this particular so cause notice. ये इसलिए जरूरी बोल रहा हूं मैं आपको कि 148A बोल रहा है इंफॉर्मेशन सजेस्ट, 147 बोल रहा है जो अमेंडेड सेक्शन है, इफ इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट देन ओनली असेसमेंट कैन बी डन अंडर सेक्शन 147. तो वहां इंक्वायरी हो रही है सजेस्ट की. अगर आप कोई भी मटेरियल उस सजेशन के बेसिस में, जो इंफॉर्मेशन आई है उस बेसिस में कोई भी मटेरियल ऐसा देंगे कि उससे आपका एस्केपमेंट निकल आएगा. Suppose for the information is coming that you have received a sum of 30 lakhs from Mr. A or Mr. B. अब आप उसको बोल रहे हैं साहब ये 30 लाख हमको मिला है, ये 30 लाख तो हमको एक फला अकाउंट में मिला है. फला अकाउंट का मतलब है कि हमने शेयर बेचे हैं उसको. कौन सी कंपनी के शेयर बेचे? आपने शेयर का नाम बता दिया, इस कंपनी के शेयर बेचे हैं मैंने. वो शेयर खुदा न खास्ता ऐसी कंपनी है जिस कंपनी भी वो एग्जिस्टेंस में नहीं है और जिसको बेचा वो भी एग्जिस्टेंस में नहीं है, और असेसिंग ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा है उसकी आपकी इंफॉर्मेशन के बाद में. और वहां ये मिल रहा है कि न तो इस कंपनी जिसके शेयर बेचे वो कंपनी एग्जिस्टेंस में है और जिसने पैसे दिए वो एग्जिस्टेंस में है. तो एस्केपमेंट हो गया भाई साहब. तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस इंफॉर्मेशन का रिप्लाई कैसे दिया जाए. उसका रिप्लाई देना पड़ेगा आपको प्रेस्क्राइब्ड मैनर में, और ये पर्टिकुलर्स जो कि प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट में लिखे हुए हैं उसका आपको देना पड़ेगा. अगर आप वो रिप्लाई नहीं देते हैं तो द असेसिंग ऑफिसर may pass ex parte order, and if you reply that, then he will consider the reply. And after considering the reply, he will pass an order. Now the order may be passed by him after considering all the materials available on record, including the reply of the SSC. तो जैसा मैंने कहा कि we have to be very careful. If some information is there, from which information concealment or escapement of income cannot be traced, then there is escape route. If we give the material that yes, then naturally the assessing officer will pass the order. Now two types of order may be there. One order is that no further proceedings is needed, proceedings to be dropped. And the other is that yes, proceedings to continue. It is a fit case for issue of notice under section 148. पर मजे की बात है कि असेसिंग ऑफिसर को कुछ ये चांस नहीं छोड़ा है कि आपने जो ऑर्डर पास कर दिया कि साहब ये प्रोसीडिंग में कुछ नहीं कर रहा हूं, आगे प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी जाए, या ऐसा भी नहीं कि वो विंडिक्ट होकर दे ये कर दे प्रोसीडिंग. इट इज ए फिट केस फॉर इश्यू ऑफ 148. एट दिस स्टेज he has to take prior approval of the specified authority. Now यहाँ एक केस पॉइंट आ रहा है कि प्रायर अप्रूवल से क्या मतलब है. The word prior approval or sanction of the specified authority जो previously प्रिंसिपल कमिश्नर हुआ करते थे और जेसीआईटी हुआ करते थे. 4 साल में जेसीआईटी
या उसके बाद में प्रिंसिपल कमिश्नर. Then there are number of judgments of the courts that they have to apply their minds. Whether the same thing will continue here, whether there has to be application of mind of the specified authority before issuing of notice, before granting approval. Friends, in my opinion, the principles decided by various courts that there has to be application of mind before the approval is granted by the specified authority. आपको मालूम है छुगामल राजपाल का एक फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सीआईटी ने अप्रूवल में लिखा था आई एम सेटिस्फाइड. सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया, एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए. आप बताओ हाउ यू आर सेटिस्फाइड. सिंपली यू आर टेलिंग दैट आई एम सेटिस्फाइड विल नॉट डू. सो एसएससी के लिए ये 148A(d) में here is a safeguard, and therefore when notice under section 148 comes, जैसा आपने हम अभी लोग क्या करते हैं कि 148 आते ही पूछते हैं साहब रीजंस रिकॉर्डेड बताओ कि आपने रीजंस रिकॉर्डेड में क्या रीजंस लिए हैं और अप्रूवल है कि नहीं है. तो असेसिंग ऑफिसर को वो ऑर्डर की कॉपी तो सर्विस करनी पड़ेगी 148D की, लेकिन अप्रूवल भी अपने मांगेंगे कि साहब वो अप्रूवल दिया है उसका कॉपी भी साथ में भेजो. हो सकता है भेजे नहीं भेजे, नियम से उसको भेजना चाहिए, क्योंकि सब इंफ्रास्ट्रक्चर जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का 398 ITR पेज 198 कि जहां क्वेश्चन ऑफ अप्रूवल आता है और हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ता है, वहां अप्रूवल की कॉपी भी रीजंस रिकॉर्डेड के साथ भेजनी चाहिए. तो यहाँ रीजंस रिकॉर्डेड नहीं है, यहाँ असेसिंग ऑफिसर ये बोल रहा है इट इज ए फिट केस फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148. If that be the position, then the commissioner is also granting approval that it is a fit case for issue of notice under section 148. If that be the position, then we should always ask, because these notices will start coming after 148, they will start coming, and 148 consequence to 148 they will also start coming. So we must ask the the approval of the principal commissioner. Because 148 can be issued only after taking prior approval of the learned PCIT. Then about the information under section 135A. अगर 135A की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक सबमिशन दे दिया है फेसलेस सेंटर को, अगर इंफॉर्मेशन में 135A की इंफॉर्मेशन है जो आईटीओ को ओरिजिनल 150, 48 D, 148 A1 के टाइम में आपने को भेजनी चाहिए थी. अगर उसने नहीं भेजी है तो इन्फॉर्मेशन भी आप उनसे मांगिए कि साहब वो इन्फॉर्मेशन क्या है हमको भेजिए. नेक्स्ट अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 148B. सारे अप्रूवल होने के बाद में 148 एक्ट नोटिस इश्यू कर दिया, 147 का असेसमेंट कर दिया, एस्केपमेंट इनकम को जोड़ दिया. तो अर्लियर पोजीशन एज ऑन टुडे इज द असेसिंग ऑफिसर himself passes the order and the assessment order is sent to the assessee and the demand is raised. उसका एक प्रोटेक्शन असेसी को ये दिया गया है कि नो ऑर्डर कैन बी पास्ड unless the prior approval is taken from the approving authority. This is because in case of search assessments, prior approval was needed. Therefore, that prior approval of search assessment has been incorporated here. That prior approval has to be taken from the Joint Commissioner of Income Tax. Joint Commissioner, Additional Commissioner, which is the present position in section 153A, 153C. इसके बाद में अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 149 में. 149 में ओरिजिनल प्रोविजन था
कि 148 का नोटिस आप इशू नहीं कर सकते आफ्टर 4 years unless the case falls and next clause. नेक्स्ट क्लोज में ये था कि आप 4 साल से 6 साल के बीच में आप इशू कर सकते हैं अगर आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम एस्केप किया हो असेसमेंट। और इसके अलावा 147 का जो ओरिजिनल प्रोविजन था, इफ देयर वाज नो प्रूवन फुल डिस्क्लोजर विद इन 4 years, दैट आल्सो कंटिन्यूड। इसके अलावा एक प्रोविजन था कि अगर किसी का फॉरेन असेट है, फॉरेन इनकम है, तो उसका 16 साल तक रीओपन कर सकते थे। उसमें 1/4/2001 से अमेंडमेंट कर दिया गया। उस अमेंडमेंट में ये आया कि आप 3 साल से ज्यादा रीओपन नहीं कर सकते अनलेस द केस फॉल्स इन द सेकंड क्लॉज। और सेकंड क्लॉज में यह था कि इफ 3 years but not more than 10 years have elapsed from the end of the relevant assessment year, unless the AO has in his possession books of accounts or other documents or evidence which reveal that the income chargeable to tax represented in the foreign asset which has escaped assessment amounts to or likely to be 50 lakhs or more. Provided no 148 shall not be issued at any time in the case of the relevant assessment year beginning. अच्छा, इसमें आपको ये बताऊं कि 3 साल से 10 साल में नोटिस कर सकता था अगर असेसिंग ऑफिसर के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। दैट मींस इन द केस ऑफ फर्स्ट सर्वे देयर वाज ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो इंफॉर्मेशन रिवील कर रही है, रिवील वर्ड का मतलब है कि समथिंग which the SSC has hidden and that was secret of the SSC but has come to light or has seen the light of the day only because of the books of accounts, documents or evidence. Now books of accounts, document, evidence में ये रिवील कर रहा है कि आपकी एस्केप इनकम 50 लाख से ज्यादा है for each of the assessment year, then assessment can be reopened provided this sum of rupees 50 lakhs is represented in the form of an asset. Now that was not clear whether it should be in the form of a concealed asset or in the form of any asset. Let us take for example that there was a loan of rupees 1 crore in the name of somebody, and naturally that money is invested in any asset, either in stock and trade or in building or in shares or any other asset that is shown in the balance sheet. Now there is document or evidence which reveal that this loan was not genuine loan. Now from the books of account alone, which is in its position, it cannot be said that the loan is not genuine. What will be the document or evidence? Now document may be that in your possession some paper was found which shows that you have taken a check of rupees 1 crore and you have repaid cash of rupees 1 crore on the same day, and everything is mentioned that yes, this money is received and this is paid. So that becomes a document. But the moot question is whether the statement of a entry operator is an evidence. Here again litigation will start, because in my opinion statement alone is not an evidence unless it is examined. Examined means the SSC has been given the cross examination. After the person was examined by the authority who has recorded the statement. Therefore, how far this will be considered as evidence will again open. इतने litigation होंगे, nobody can be saved when there is a search, because I know every nation, every search case, जहां भी लोन है, जहां भी शेयर कैपिटल है, तो किसी को भी बुला लेंगे जिसने शेयर एप्लीकेशन दिया, जिसने लोन दिया, स्टेटमेंट फोर्सफुली रिपोर्ट करवा लेते हैं,
कि साहब हमारा ये लोन है, ये बोगस ट्रीट कर लो, हमारी शेयर कैपिटल बोगस ट्रीट कर लो. Now this may become an evidence against the SSC and the assessment is likely to be reopened. इसमें एक शेपिंग है, वो बड़ी देखने की बात है. If no notice under section 148 could have been issued before first day of April 2021, beginning on or before, that means अगर assessment टाइम बार्ड ऑलरेडी हो गया है 31 मार्च 21 को, जिसमें 148 इशू नहीं कर सकते थे, तो क्या उसमें 10 साल एप्लीकेबल होगा क्या? अब सोचिए कि किसी की सर्च में 12-13 असेसमेंट ईयर में कुछ मिला है, चाहे शेयर कैपिटल, चाहे बोगस लोन या एनीथिंग, एनी पेपर और डॉक्यूमेंट which reveals that some asset is there which was not disclosed and some income was there which was not disclosed, whether that can be reopened. In my opinion, because of this provision, it cannot be reopened because assessment year 12-13 could not have been reopened after 31st March 2019. If that assessment could not have been reopened by 31st March 2019, then probably it cannot be reopened after 31st March 2021. Actually, this is covered by a number of judgments. I can give the citation of one judgment, that is Manikchand Natha, Calcutta High Court, 78 ITR. उसमें पहले ही है कि भाई अगर कोई आदमी कोई चीज अगर ऑलरेडी उसकी डेथ हो गई है तो यू कैन नॉट रिवाइव. इसमें रीओपनिंग प्रोविजंस ऑलरेडी खत्म हो गए फॉर 12-13. So by virtue of introduction of new provision, you cannot revive. Therefore, in my opinion, so far as assessment in 12-13 is concerned, up to 12-13 rather, assessment cannot be reopened. From 13-14, in fact, though it expired from 31st March 2021, rather 13-14 also cannot be reopened because on 31st March 2021 it has already expired. Even though limitation for 13-14 was extended from 31st March 2020 to 31st March 2021. So how far this will apply? 13-14 का लिमिटेशन बढ़ा दिया 31 मार्च 21 तक है. 14-15 का तो रिओपन हो सकता है, उससे पहले का नहीं हो सकता. अब उसमें अमेंडमेंट एक और कर दिया गया है जो कि उस टाइम किया था 2021 में, कि वो भी जो सर्च सीजर केसेज हैं उसमें भी इंफॉर्मेशन नहीं ट्रीट की जाएगी. और असेट शैल इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड, बिल्डिंग, शेयर, सिक्योरिटीज, लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स एंड बैंक अकाउंट्स. The word is inclusive definition. It is not exclusive. So any type of asset will be included. This was subject to the provisions of section 151. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट अब नया ये किया गया है 2022 में, जो इवेंट को वहां से हटा दिया गया था इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, उस इवेंट को 149 में लेके आ गए हैं. उसमें बड़ा डेंजरस अमेंडमेंट किया है. अगर कोई भी इवेंट हुआ है और उसकी इंफॉर्मेशन आई है और उसमें 50 लाख से ज्यादा खर्चा है, तो जरूरी नहीं कि 50 लाख का एक साल में खर्चा हो. पहले यह था कि 50 लाख से ज्यादा एस्केप इनकम इन 1 ईयर, और असेट नहीं मिली तो कुछ नहीं. अब यह हो गया कि 50 लाख से ज्यादा एस्केप इनकम इन 1 ईयर, लेकिन आपका खर्चा 2 साल 3 साल में हुआ 50 लाख रुपया मैरिज में या और कोई इवेंट में, द असेसमेंट कैन बी रीओपन्ड. दिस इज वेरी डेंजरस अमेंडमेंट. They use the word and the investment in such asset or expenditure in relation to such event. That means आपने अगर ज्वेलरी भी खरीदी है, in relation to that event, it is not that in relation to any asset, but in relation to that event or expenditure in such event or occasion has been made or incurred in more than one previous year relevant to the assessment year within the period referred to in section B of section 1 of notice under section 148. That means 10 साल में अगर वो खर्चा 3 साल में भी डिवाइड हुआ है, एस्केप इनकम आपके 50 लाख एक साल में, तो 1 साल में आपकी ट्रीट की जाए. दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन.
वो फ्लैग्ड वाली जो बात थी, एक मिनट कमल जी, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर भी होंगे क्या? यस प्लीज। यस सर, क्वेश्चन आंसर होंगे। सेशन होगा सर। कितना होंगे। मिनट पहले छोड़ूं? बस अब होंगे क्वेश्चन आंसर। शुरू करें या मैं क्या करूं? थोड़ा देर और चला सकते हैं। अच्छा, अब जो आपका 148 में जो फ्लैग्ड इंफॉर्मेशन वाले वर्ड सारे थे, वो भी सारे फॉर द पर्पज ऑफ 149 हटा दिए गए हैं। दैट इज बीन मेड इन लाइन विद सेक्शन 148 इटसेल्फ, सो दैट द वर्ड इंफॉर्मेशन कंट्राडिक्टरी नहीं हो, both are in line. Now section 151, sanction for issue of notice. जैसे ओरिजिनल सेक्शन था, no notice under section 148 shall be issued under section by the assisting officer after expiry of period of 4 years from the end of the relevant assessment year, unless principal commissioner or chief commissioner or principal commissioner is satisfied on the reasons recorded by the assisting officer that it is a fit case for issue of notice under section 2 in the case other than the falling under 1. तो इसका मतलब था कि उनको 151 में सैंक्शन लेना था, और वो सैंक्शन था विद अप्रूवल ऑफ द रिलेवेंट अथॉरिटी, एंड दैट टू वाज विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड. अब उसको चेंज कर दिया गया है. जॉइंट कमिश्नर का काम खत्म. जॉइंट कमिश्नर कैन नॉट गिव एनी सैंक्शन if the assessment is being reopened only for 3 years. Then the principal commissioner or principal director. And if the assessment is being reopened for more than 3 years, then the approval will be of the principal chief commissioner or principal director general. और वो अगर उस particular station में नहीं है, then the principal director general or chief commissioner of income tax, if it is after 3 years. इसको अमेंडमेंट को ले आए थे 1/11/2020 से. सवाल ये आता है कि अगर कंपिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना है, यार अप्रूवल किसी और अथॉरिटी ने दे दिया है, तो वेदर दैट अप्रूवल इज वैलिड. सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, एस गोयनका लाइम एंड केमिकल्स 64 taxman.com कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना जरूरी है. एप्लीकेशन ऑफ माइंड उसी आदमी का होना है जिस आदमी ने अप्रूवल दिया है, सैंक्शन दिया है. अगर वो सैंक्शन और वो वर्कआउट नहीं करते वैसे वाले, अगर वो सैंक्शन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का नहीं है, then that sanction is not valid. एक क्वेश्चन आया कि साहब सैंक्शन तो एडिशनल कमिश्नर का लेना था, लेकिन कमिश्नर ने दे दिया तो हायर अथॉरिटी ने दिया है, therefore that sanction is valid. The honorable Bombay High Court said that no, that sanction is not valid. That is in the case of Khushbu Industries. If PCIT cannot apply his mind when the mind of the JCIT was to be applied. It was the other way around. जो आई कैन नॉट लिखे होते ना सर, कोई सीआईटी का तो वाटर गन एंड किस तरह वैसे लिखते ना सब. क्या बोल रहे हो भैया? क्या बोल रहे हो? नहीं सर, वो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट सर का अनम्यूटेड था, सब म्यूट कर दिया सर उनको. कोई बात नहीं. फिर ये आया कि ये फेसलेस असेसमेंट भी हो सकता है. ये सारा जो एक्सरसाइज है सारी फेसलेस हो सकती है. उसके लिए सेक्शन 151 लाए, 151A लाए. ठीक है, वो तो प्रोसीड्यूरल काम है, उसमें अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है. 153A में अमेंडमेंट किया, टाइम लिमिट को एक्सटेंशन कर दिया कि असेसमेंट डेट 2021-22 का असेसमेंट होगा तो 9 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा. 19-20 के बाद में 19-20 के बाद का है तो 12 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा. नाउ दिस फ्लैग्ड इंफॉर्मेशन इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. अभी आप देखिए कि 2 एडीआईटी विंग से नोटिस आ रहे हैं कि आप ये डिटेल दीजिए, इंफॉर्मेशन दे दीजिए. The notification says that the assessee should not be called personally.
though there is no notice under section 135A, but the spirit of this notice has to be maintained because they are calling for the information. आप देखेंगे कि बहुत सारे नोटिस ऐसे होते हैं उसमें लिखा भी रहता है कि you simply submit the information, there is no necessity to personal appearance. वो जरा पीछे में लिखा रहता है, सामने में लिखते हैं कि you are required to attend personally and give the following information. Therefore, if any information is called for under section 135A or the spirit of 135A, in my opinion, no personal appearance is necessary even at this stage of the proceedings before any authority who is asking for personal appearance. And if you remember, there was a circular also in the same line. So the intention of the board has come out. There was a circular in 2016 that if the ADIT wing or the wing is to collect some information, it need not insist on the personal appearance so long the information is given by the assessee. Therefore, in my opinion, no personal appearance can be called. इसके अलावा flagged information में क्या है मैं आपको बताऊं. Audit objection was only by C and AG, that means Comptroller and Auditor General, not the normal information. Then information from any other government agency or law enforcement agency, that means Black Money Act or any this SEBI or any person. Then they included information arising out of internal objections, that means revenue audit objections also came here in this, and this is included in the amendment. Then information received from any income tax authority, including the AO himself. I fail to understand how the AO himself information can be treated as information. That means he is entitled to look into the assessment records itself. He can form a belief that this particular income was taxable and this has not been taxed by me, this has escaped assessment. How far this will be allowed, I do not know. Information arising out of search and survey action, that is already included in section 148 and 149 also, that this will be treated as information even without recording any reasons under section 148A. Then information arising out of FT and TR references, information arising out of the order of the court or impact of the assessee on any other assessee. Cases involving addition or recurring issues of law and fact. अगर मेट्रो सिटीज में कोई असेसमेंट किसी के एडिशन 25 लाख से ज्यादा हुआ है और फर्स्ट अपील में कंफर्म हो गया है, और छोटे शहरों में 10 लाख से ज्यादा हुआ है, फर्स्ट अपील में कंफर्म हो गया है, then that will also be treated as information. So friends, how much litigation will take place, I do not know, but it is, I can say for the professionals that जो फेसलेस रिजाइम की बात कर रहे थे, फेसलेस रिजाइम में the profession मार खाएगा. Take it for granted that the bureaucrats who are drafting this legislation, they will always make room for you for the practice, because this litigation will continue even for 10 years, which was not there earlier. It was 6 years, it has been extended 10 years. So that is all about the amendments made in section 148 to 153. Thank you. Thank you, sir. ना बोलो Sir, so should we take? छोड़ दिया. हाँ sir. So should we take question answer session now? Yes. So from the audience, if you have any question, you may please unmute yourself and you may ask. Anybody? Hello. Yes. Madam, I have some question. Yes, please ask. Yes, sir, Suppose please go ahead. We can hear you. Yeah. The 148 issued 31st March and received 1st April, and whether it is legality, how the legality in the court now? माने 2013-14 years. हाँ जी. इंटीमेशन साहब रिसीव हुआ है 1 अप्रैल को सवेरे हुआ है. तो बहुत सारे लोगों ने रिट पिटीशन लेकर हाई कोर्ट में गए हैं, तो इसका क्या रिजल्ट हो सकता है? देखिए भाई साहब, आपको मैं बताऊं कि नोट 148 सेक्शन बोल रहा है इट शुड बी इशूड. देखो साहब, इसमें एक और फर्क है, इश्यूड और इश्यूएंस. आप मेरी बात सुनिए. 148 ओरिजिनल सेक्शन जो था,
that says that the notice should be issued within 6 years from the end of the assessment year. उसके बाद में 1 साल का extension मिला because of the COVID. So the original provision remains that notice under section 148 is to be issued. Now this question came up for consideration before the Honorable Supreme Court in the case of R.K. Upadhyay. 166 ITR देखिएगा आप, मैं पेज नंबर मेरे को भी याद नहीं है. R.K. उपाध्याय, दिल्ली हाई कोर्ट. अरे दिल्ली हाई कोर्ट नहीं भाई साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ. अच्छा, सुप्रीम हाई कोर्ट. ओके. सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा R.K. उपाध्याय में कि अगर नोटिस इश्यू हो गया है और उसको आप डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, आप सर्विस को डिस्प्यूट कर रहे हैं. आपने भी बोला कि हमारे पर 1 तारीख को सर्विस हुआ है. आपने ये नहीं कहा कि 1 तारीख को इश्यू नहीं हुआ, 1 तारीख को इश्यू 1 तारीख को हुआ. अगर आपने ये बोला अपने एफिडेविट में कोर्ट के सामने कि साहब ये 1 तारीख को इश्यू 1 तारीख को हुआ है, 1 तारीख को सर्विस भी हुआ है, 1 तारीख को इश्यू भी हुआ है, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि 1 तारीख को इश्यू हुआ है. रादर वी कैन थ्रो द बॉल इन द डिपार्टमेंट्स कोर्ट. साहब 1 तारीख को हमको इसका रियल टाइम अलर्ट मिला है और रियल टाइम अलर्ट इज लिंक्ड विद द पुटिंग ऑफ द नोटिस इन द पोर्टल. तो उन्होंने पोर्टल में डाला ही 1 तारीख को है, 1 अप्रैल को डाला है. Therefore, this was not issued before 31st March and did not leave the control of the AO before 31st March. Therefore, you may have a case. Otherwise, R.K. Upadhyay is very clear that if the notice is issued within 31st March and the SSC has not disputed the issue, only disputing the service, you have no case. ओके साहब, दूसरा क्या है, 151 का टाइम होता है, 148 से पहले 148 के लिए उनको रिमाइंड करें, भेजते नहीं है, 9 महीना के बाद भेजते हैं. अगर वो डिफेक्टिव 151 जो रिकॉर्डिंग रिपोर्ट होता है ना, हाँ जी, 150 वो जैसे हमने मांगा मई महीने के अंदर में, फिर नवंबर में रिमाइंड किया, भेजते हैं अभी जनवरी में. आप मेरे को एक बात बताइए, आपने जीके एंड ड्राइव साहब पढ़ा है क्या? हैं? जीके एंड ड्राइव साहब का जजमेंट पढ़ा है क्या? नहीं साहब, नहीं पढ़ा. आप पढ़िए 259 ITR पेज 19. अच्छा, डीके जीके एंड ड्राइव साहब, जीके एंड ड्राइव साहब, हाँ पढ़ा, ठीक है. पढ़ा है ना? उसमें ये बोलता है कि 148 नोटिस आने से आप पहले पार्टी बनिए. पार्टी मीन्स यू फाइल द रिटर्न. अब रिटर्न या तो आप वापस से अपलोड कीजिए या मेरी तरह लेटर दे दीजिए कि साहब ओरिजिनल को ट्रीट करो. उसके बाद में और आप रीजंस मांग लो, साथ साथ में रीजंस भेजो और अप्रूवल भेजो. अब आपको रिमाइंड करने की क्या पड़ी है? अगर वो रीजंस और अप्रूवल नहीं भेजता है और ऐसे करता है तो आपका 1 मिनट में ऐसे टूट जाएगा. आपको क्या दरकार है रिमाइंड करने की? अच्छा साहब, अगर आया वो डिफेक्टिव हो तो क्या करे? जैसे नाम कुछ और हो और नाम कुछ और है, और ये ऐसा भी है, मतलब इस तरह का केस है कि नाम कुछ और है. मैंने आपको भी अभी मैंने आपको जजमेंट बताए थे कि अगर डिफेक्ट है, नाम में भी डिफेक्ट है या आपके अमाउंट में भी डिफेक्ट है, तो कोर्ट्स ने ये बोला है कि ये असेसमेंट नहीं टिकेंगे बिकॉज द नोटिस इटसेल्फ वाज डिफेक्टिव. तो अगर नोटिस में नाम ही अगर दूसरा है तो आपका तो केस हो गया, आपको लड़ने की दरकार ही नहीं है कोई. नहीं, नाम है पर पैन नंबर हमारा है. देखिए नाम क्या है ये बताइए आप. नाम आपका नहीं है ना? नाम ए का है पर पार्टी बी है. क्या मैं समझा नहीं, क्या है पार्टी बी? मतलब नाम ए का है और पैन नंबर बी का है. नाम ए का है ना, तो नोटिस डिफेक्टिव है. नोटिस डिफेक्टिव नहीं, इनवैलिड है नोटिस. आप ऐसा करो, हाँ जी, सुरेन इंटरनेशनल का जजमेंट देख लेना, 357 ITR पेज 24. सर एक बार कौन सा? 357 ITR 24 और 384 ITR 144. आप जजमेंट देख लेना कि अगर नोटिस में डिफेक्टिव है, इवन डिजिटल डिफरेंट फिगर्स में भी डिफरेंस है, दैट नोटिस इज इनवैलिड. हाँ ठीक है साहब. तो आपका तो पूरा नाम ही डिफरेंस है. हाँ, एक तरफ नाम सही दिया और अंदर में जाके नाम को फिर वो बी का नाम लगा दिया. मैं देखिए तो मैंने बता सकता हूँ, ऊपर में नाम सही दिया है, भीतर में दिया है, तो ये तो देखने से मालूम पड़ेगा. अमाउंट का डिफरेंस है, नोटिस में ये है तो नोटिस का मैंने बता दिया. अमाउंट का भी डिफरेंस है, नाम का भी डिफरेंस है, और जो डिटेल दिया उसमें भी डिफरेंस है. लाइट वाला लगाएगा तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस. डोंट टेक माय ओपिनियन एज करेक्ट, क्योंकि नोटिस देखे बिना मालूम नहीं पड़ेगा. मैं ये कह सकता हूँ नोटिस में अगर वो डिफेक्ट है, अमाउंट डिफरेंट है, नाम डिफरेंट है, तो दैट इज नॉट वैलिड नोटिस. ऑन प्रिंसिपल आई कैन टेल यू. ओके साहब, थैंक यू साहब. हाँ जी, हेलो. Yes sir, you are audible sir. सर जैसे आपने कहा सर
कि वो जो 1 तारीख को जो मेल आया मेरे पास में और उसमें नोटिस का डेट 31 तारीख का लिखा हुआ है, हाँ तो हमने कोई हाईकोर्ट में गया है, वो तो इश्यूएंस ऑफ द नोटिस को ही डिस्प्यूट करेगा सर, बट पोर्टल में तो it cannot be proved when it has been sent in the portal, as because the mail has been received on the 1st of April, suppose at 8 in the morning. देखिए, So मैंने अभी when the आपको mail बताया, has come, the देखिए date, आप जो सेक्शन 292B और Correct. सेक्शन 292 में जो सर्विस नोटिस का प्रोसीड्यूर है वो ये है कि अगर आपके कोई भी मूड में आपके अगर उसने लोड कर दिया है तो आपके पोर्टल में लोड कर दिया 31 मार्च को, दैट इज सफिशिएंट सर्विस, फॉलोड बाय रियल टाइम अलर्ट। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये बात कहता है कि अगर आपने पोर्टल में डाला है नोटिस तो इट शुड इमीडिएटली फॉलोड बाय द रियल टाइम अलर्ट। तो अगर आपके पास अलर्ट आया है तो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक वाले आदमी से बात कीजिए कि साहब ये पोर्टल में कब लोड हुआ है, या आप निकाल के मेरे को बताइए। अगर आपके पास रात को 12 बजे का 31 तारीख का अगर आपके पास स्नैपशॉट है, उस पर अगर नहीं गया नोटिस, देन यू हैव ए गुड केस। अदरवाइज इट इज फॉर यू, क्योंकि आप देखिएगा नीचे उसमें आईटीओ का डिजिटल सिग्नेचर है, उसमें 31 तारीख लिखा है उसने। करेक्ट। देखिए, लेकिन सर जो मेल हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर 31 मार्च। अरे भैया वो रिसिप्ट वाली बात मैं कर रहा हूँ, मैं इश्यू वाली बात कर रहा हूँ, आप रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। You have to prove that it was not issued before 31st March. That's all. The onus lies upon me or line upon the department. आप पहले आपने लिया है क्या, आपने रिट पिटीशन में ये डाला है क्या कि it was not issued? Yes. It was issued after 31st March. मैं यही बोल रहा हूँ ना, मैंने भी रिट पिटीशन ऐसे देखे हैं और मैंने सबको ओपिनियन यही दी है कि साहब आपका ये अमेंड कीजिए रिट पहले, या एफिडेविट फाइल कीजिए हियरिंग स्टेज में कि साहब इट वाज इशूड आफ्टर 31st मार्च। आप ये बोल रहे हैं 31, आप आर के उपाध्याय का मैंने बताया जजमेंट एक बार पढ़ लीजिए। वो जजमेंट ये बोल रहा है कि if the SSC has not disputed the issue within the time, then no case. If the SSC, आप लैंग्वेज समझिए, that says that if the SSC has not disputed the issue within time, you have no case. Okay sir. तो आपने डिस्प्यूट नहीं किया तो कैसे होगा? But the Karnataka High Court is granting the passing the order of the 148. नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोई भी ऐसा ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं किया है, कोई ने ये बात बता कर ये कर ली और डिफरेंट इश्यू है। अदरवाइज कलकत्ता हाई कोर्ट में लास्ट जो जजमेंट आया है उसमें ये बोला है इस इश्यू को डिटेल में सुनेंगे। अभी आईटीओ को डायरेक्शन दिया है कि आप इसका असेसमेंट कंप्लीट कर दो, लेकिन इसको सर्विस मत करो जब तक हमारा असेसमेंट खत्म नहीं हो। इसमें रितेश गोयल अपील किया, आप उसका जजमेंट पढ़िए। आप अपडेट रहिए भाई साहब, अपडेट रहिए, लेटेस्ट जजमेंट क्या है 2 दिन पहले का देखिए। मैं 2-3 केस जानता हूँ सर, जिसमें सुबह 7:42 में नोटिस आया है मेल में। अरे भाई साहब, सुबह 7:40 छोड़ो ना, रात को 1:03 पे आया तो भी चलेगा। इशू नहीं हुआ तो ये बताओ आपकी इशू नहीं हुआ तो, बट आई हैव सीन द कलकत्ता हाई कोर्ट जजमेंट सर, in that order the notice has been the high court has directed to pass the 148. क्या पास रिक्वेस्ट किया गया? Yes sir. आप मेरे एक भी जजमेंट भेजिए जिसमें लिखा है कि 31 तारीख को नोटिस सर्विस नहीं हुआ, 1 तारीख को सर्विस हुआ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक भी जजमेंट भेज दिए मेरे को। आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं देखता हूँ, दोबारा पढ़ के भेजता हूँ सर। आप भेजिए एक भी ऐसा कोई जजमेंट हो जिसमें कि इतना ही हो खाली 1 तारीख को सर्विस हुआ इसलिए नोटिस रिक्वेस्ट, एक भी जजमेंट भेज दीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी। इट मे बी पॉसिबल सर कि द जजमेंट में वो बात लिखा कि नहीं लिखा, बट आई एम अरे सुनो, आपने एक कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया और वो जजमेंट दे दिया तो उससे क्या होगा? वहाँ 500 जजमेंट एक साथ में होते हैं और जजमेंट वही होता है जो लिखा होता है, बाकी जजमेंट नहीं होता है। जजमेंट में वो बात लिखी भी नहीं है सर, तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ? थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर जी नोटिस इशू हुआ है, एचयूएफ का पेन नंबर है, लेकिन नोटिस के ऊपर नाम इंडिविजुअल का लिखा है, सामने एचयूएफ नहीं लिखा है, तो नोटिस वैलिड है क्या? नहीं, वो वैलिड है क्योंकि वो कर्ता के नाम से नोटिस दिया गया है। अच्छा, उसमें कर्ता बोल के नहीं लिखा हुआ, नाम खाली इंडिविजुअल लिखा हुआ है। मत लिखो, चाहे कर्ता है वो, ही इज द रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। अच्छा, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है। प्लीज क्वेश्चन खाली जो पूछ रहा हूँ वो अनम्यूट करें प्लीज, अदर्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, यू आर ऑडिबल। सर एक रीजंस रिकॉर्डेड रिसीव हुआ है एओ से
जिसमें वो कहते हैं कि भाई आपने एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया था एक पर्टिकुलरली कोई पेनी स्टॉक में, जो कि आपने नहीं दिखाया, विच हैज बीन स्केप्ड असेसमेंट, बट इनफैक्ट द क्लाइंट हैज एक्चुअली उसने शेयर ट्रेडिंग किया था जिसमें कि लॉस हुआ था, सो देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग असेट एज सच। तो इस केस में सर नोटिस क्या इनवैलिड रह जाएगी? आप बोल रहे हैं कि आईटीओ ने लिखा है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था एक एक्स अमाउंट का, जबकि वैसा कोई एक्स अमाउंट का मेरे पास कोई गेन ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो आपने वापस जवाब क्या दिया, उस पर सारा दारोमदार है। हाँ नहीं, मैंने आप रीजन ये सपोर्टेड लिखिए, का अभी जवाब नहीं दिया है। आपको तो खाली ये लिखना है कि मेरा ऐसा कोई अमाउंट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, बात खत्म। बस, बट वो 142.1 जो दिया है उसमें काफी इंफॉर्मेशन मांगा है, तो उससे तो सारा रिवील हो जाएगा। नहीं, उसमें आप क्यों लेते हैं भैया? आप मेरे को सारा, आप लिखिए कि आप सारा मटेरियल मेरे को भेजिए, आप किसी स्पेसिफिक बोला है कि मेरे को गेन हुआ है, आप सारा इन्फॉर्मेशन मटेरियल भेजिए, तब मैं जाके रिप्लाई दूंगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। Anybody else? सुमेर जी, राजेश जी ने हाथ रेज सुमेर जी, हेलो, आई एम ऑडिबल? बरखा जी टाइम लिमिट कर दीजिए, नहीं तो एंड नहीं है। हेलो सुमेर जी, we will take last question. सुमेर जी। हाँ जी, हाँ जी सर, सुनाई दे रहा, बोलिए सर। हाँ, मैं आरडी काकड़ा बोल रहा हूँ। बोलो काकड़ा जी। हाँ, एसएससी अभी वर्तमान में कलकत्ता के अंदर में एसेस्ड हो रहा है। 2013-14 की नोटिस नागपुर से आई, हमने उसको चैलेंज किया कि ये आपका एसेस नहीं बनता जुरिडिक्शन, तो उन्होंने कलकत्ता के अंदर में पेपर से 2022 में भेज दिए। अब 2022 में कलकत्ता नेशनल एनएफएससी चिट्ठी दे रहा है कि आपको नोटिस उस हिसाब से गई थी 31/3/21 को 13-14 की, उसका आप रिटर्न भरिए, और 142(1) में भेजा है। तो 148 की नोटिस नागपुर से आई थी, उसके बाद में वो जो 31/3/21 के बता रहे हैं वो नागपुर से आई थी, और कोई नोटिस नहीं आई। ठीक है, ये बात है। नहीं ऐसे है काकड़ा जी की, कोई भी आप 148 की प्रोसीडिंग को चैलेंज करते हैं ना, तो फर्स्ट जीके एंड राइट्स आप सेट फर्स्ट यू हैव टू बी पार्टी टू द प्रोसीडिंग। तो आपको 148 की कंप्लायंस करनी चाहिए, मेकिंग कलकत्ता एड्रेस, एंड देन यू से दैट द नोटिस इज विदाउट जुरिस्डिक्शन, बिकॉज यू आर ऑलवेज असिस्ट एट कलकत्ता, योर एड्रेस इज कलकत्ता, नागपुर हैज नो जुरिस्डिक्शन। और उसके लिए आपके पास नंबर ऑफ जजमेंट्स मिल जाएंगे। मेरा किया हुआ 2 जजमेंट आपको बता देता हूँ, के वायर्स लिमिटेड कलकत्ता ITAT और मालचंद मोतीलाल कोठारी एंड कंपनी कलकत्ता हाई कोर्ट, कि अगर नॉन जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर अगर इश्यू करता है नोटिस, तो दैट नोटिस इज इनवैलिड, एब इनिशियो वॉइड। ठीक है, ओके। Thank you so much, sir. We will not take any more questions. If you have any questions, you can please mail it to us. We'll surely forward it to sir, and sir will give the reply if possible for sir. Thank you, Barkha ji. Thank you all. Thank you so much, sir. So it was a wonderful deliberation, sir. We thank you all, sir. धन्यवाद जी। Now I request Manju Di to please introduce the second speaker of the day. Manju Di, you are available? Yes, am I audible? Yes, Hello, yes, am I you are audible? audible. Yes, you are audible. Yeah. Please introduce the second speaker, Mr. Paras Kochar. Yes, I'm humbly requesting or welcoming Mr. Paras Kochar, Advocate Paras Kochar, to be decided over the second session. He'll be elaborating on the plan your future through will, succession, and trust. Now I'm reading his profile. Factually, he doesn't need any introduction. But still, Mr. Paras Kochar is an advocate and tax consultant practicing at Kolkata, is a speaker of repute, and is regularly addressing in the seminars on direct taxes across the country. He primarily focuses on the search and seizures and surveys operations conducted by the Income Tax Department, not only in Calcutta, but also in other cities. He also takes up matters related to appeal and consultancy. The module of workshop on search and seizure and survey has been designed by him in a very attractive and informative style. This workshop is very popular in Kolkata, and its popularity is increasing gradually through the country. He has also been erstwhile president, vice president, and members of the various profession organizations like BTPA, Avantika, Tax Advocate Associations of Bengal, and many others. This year, he is the president of
Apart from this, he is also actively engaged in the social work and is also past president of the Lions Club of India and Lions Club of Tollygunge, Kolkata, and other social organizations. He is also past president of DTPA. He specializes in research and seizure, and he is a stalwart in his profession. He basically practices direct income tax. I am welcoming him for elaborating his views on the trust, successions, and wills. I welcome Paras Kochar to proceed the proceedings. Thank you, Manjudi. I request Mrs. Neha Agarwal to please present a virtual flower bouquet to the second speaker, Mr. Paras Kochar. We welcome you, sir. Thank you, Barkha. Thank you, Neha ji. So you may start your deliberation, sir. Thank you. Friends, good evening. I know you cannot reciprocate my greetings because you are muted. So I treat as in reciprocation. Respected President Kamalji, Secretary Barkha, office bearers, past presidents, and participants. Really, I am very glad for getting an opportunity to share my views on Plan Your Future by will, succession, trust, etc. by my own association, DTPA. I am past president of DTPA. I am also thankful to CA Mahendra Agarwal, convener of Study Circle DTPA, for inviting me at this platform for today's webinar. I am also grateful to CA Manju Shukla for introducing me in such lovely words. Friends, in this COVID-19 period, every near and dear was in fear, and people are rushing for life insurance and medical aid, but they don't think that even something happens to them, whether this small amount of insurance will be sufficient for their family. What will happen if the state of the person who has expired may or may not be due to corona? The family can lose more than what they will receive from insurance companies or any other compensation. Family which inherit the property can pay more income tax, more stamp duty, can face more litigation, and can face more actions for non-compliance of statutory laws. But people hardly think about this. They think for an immediate gain, but not for larger future benefit. It is easy to earn, but difficult to save. Many times, protection of health is more important than earning more profits. As soon as a child is born, we plan for his livelihood, education, marriage, and try to settle him in business or profession. When we become older, we start thinking about our estate to be given to him, our wife, and other beneficiaries after our demise. Child is child, and even they have grown, they are child for his father. Friends, my experience says that people remain very busy in their life, so most of the people dies without making any legal arrangement for their legal heirs or successors. Why people don't plan their or their near relatives' future? Because they think but don't give any preference to such planning. They only think but don't take any planning. They are overconfident that no dispute will be there in their family after their demise. They don't estimate indirect loss and mental agony they may suffer if they have not planned for future. For future planning of estate, there are various modes of distribution of assets such as will, succession, gift, trust, etc. I will cover each such point one by one. I would like to give some PowerPoint presentation, friends. Are you able to see? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. We can see. Okay.
First is ways to distribute properties during lifetime and after demise. Yes, we can plan to distribute our property during our lifetime and as well as after demise. Source of property. What is the source of our property is very relevant for today's topic. It can be self-acquired property. It can be inherited property. Self-acquired means by own earning. Inherited means by succession, forefathers' property, and separate property. It is a new term. So what is separate property? It is obstructed heritage, a property inherited by a Hindu from any person other than his father, or lineage ascendant up to 2 more degrees is separate property. Gift of a small portion of the ancestral property by a father to his son is also a separate property. Why small portion? Because so many courts have said that gift from mature can be made is necessary, but within a reasonable limit. That is why the word small portion is being used. And adverse possession, property acquired by a father by adverse possession is his separate property. Adverse possession means if somebody is acquiring a property for more than 12 years without any documents, etc., forceful possession, it is called adverse possession. I don't want to go in detail because this is not the subject today. What are the mode of distribution of assets, whether after demise or during lifetime? Through succession, through will, through trust, through HUF, and through gift. These are main 5 modes from which the property is being distributed. As regard succession is concerned, the succession of Hindu, Jain, Buddhist, and Sikh. Jains, Buddhists, and Sikhs are also Jains and Sikhs are also called Hindus as per Supreme Court. Is governed by the Hindu Succession Act. Muslim succession is governed by the Muslim Personal Law, and Christians are governed by Indian Succession Act. Section 21 of the Special Marriage Act 1954 provides that any person whose marriage is solemnized under the Special Marriage Act 1954, succession of property of such person shall be regulated by the provisions of the Indian Succession Act. As per the Special Marriage Act 1954, the marriage between the persons of 2 different religions is solemnized, and the succession of property will be governed by Indian Succession Act 1925. Suppose there is a marriage between a Hindu and Christian, then the marriage is governed by Special Marriage Act 1954, and they will be governed by Indian Succession Act 1925, not by Hindu Succession Act. There is no choice with the person to transfer the property as per the desire of his demise if he is governed by the Succession Acts. Yes, those who are governed by Succession Acts are bound to be regulated by Succession Act. The property will be distributed as per Succession Act only. Will. Will means bequeathing property as per sweet will and desire of the person. Through will, the testator can bequeath his or her estate to any of his beneficiary he likes. There is no restriction in law. Will takes after the demise. It is not effective during the lifetime. It takes effect after the demise of the person who has made the will. Now, trust. Trust can be created during lifetime and also after demise through will. Suppose a son is handicapped, irresponsible, incapable, or an idiot. He thinks that if his property is given to him after his demise or even during his lifetime, his son may not be able to manage it. So he can create a trust through will, or even during the lifetime, he can create a trust and make his most reliable and efficient relatives and friends as the trustees of the will, who will manage the property as trustee. The trustee will manage the entire business, all the property, make investment, will do business, will sell, will earn income, but the income will be enjoyed by the son only, not by the trustee. They are simply the caretaker. However, during lifetime also, as I have told, that such trust can be created for the son.
only yesterday, a fund management consultant told me that some of the big businessmen want to create fund in trust of their minor child and not in their personal names, as when they become treasurer, they find that they are a lot of wealth, they can start passing expensive life. उस फंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव मेरे को कहा कि ऐसे बहुत से बिजनेसमैन है, वो अपने लड़के की फाइल में ज्यादा कैपिटल नहीं रखना चाहते हैं, ज्यादा इनकम नहीं शो करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि लड़का जब मेजर हो जाएगा तो वो देखेगा कि उसके पास इतने करोड़ रुपए हैं, इतने लाखों रुपए हैं, तो शायद वह उसका दिमाग ठिकाने नहीं रहे और वो ज्यादा खर्चा करने लगे। इसलिए ये लोग उनकी ट्रस्ट क्रिएट करके ट्रस्ट के थ्रू फिर उसकी इनकम और असेट्स का इंक्रीजमेंट करना चाहते हैं। This is what he has told me out of his own experience. He's a big wealth management person. HUF, prepare property can also be transferred through HUF during lifetime or after lifetime by total partition of the HUF property. Yes, if the total partition is made, HUF property can be divided between the members of the HUF. Gift. By making gift, any person can transfer his property to his relative as per section 56 of the Income Tax Act out of love and affection. Although gift can be made to anyone, but obviously there will be a tax as per the rate prevailing under the Income Tax Act. And if the gift is made to the relatives as mentioned in section 56 of the Income Tax Act, it is not subject to tax. That is the basic difference. First, I will deal the Hindu Succession Act, Hindu males, how the property left by a deceased Hindu is divided or transferred among his heirs. Friends, as per Hindu Succession Act, there are different classes, class 1, class 2, class 3, class 4. In these classes, the names of the heirs have been mentioned, and the property will be distributed exactly as per these classes, exactly as per the names mentioned or the relation mentioned in the list. No one can change the priority or even the shares in the particular property. Whatever has been mentioned in the act, it has to be followed. So what is class 1? Class 1, if a person dies intestate means without making any will, if a person dies. Hindu Succession Act applies only when there is no will. If there is will, the property is transferred as per the will. So if a person expires, the property will be first divided between his widow, daughter, mother, and son equally. If these 4 persons are alive at the time of the demise of the person, then the property will be distributed equally to these 4 classes of persons who are listed in class 1. And if the son has predeceased, before the demise of the person, his son has expired, then the property will be given to the daughter of the son, any grandson or granddaughter and grandson. And if the daughter has predeceased, daughter has expired before the demise of the person who was deceased, then daughter's daughter or daughter's son, it will be given. And thereafter, the widow of the son, बेटे की विधवा, पोते की विधवा आदि, इस तरह से ये जो क्लास 1 ऑफ हेयर्स का ये टेबल है, और इस टेबल के हिसाब से फर्स्ट 4 जो है विडो, डॉटर, मदर और बेटा, इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। और इनमें से कोई भी अगर नहीं है तो उनके जो शेयर है, उनके जो बेनिफिशियरी है, उनके जो हेयर्स है जो इसमें मेंशन्ड है, उसके हिसाब से उनको दी जाएगी। अगर मान लीजिए किसी के 2 बेटे हैं तो जो 25% शेयर है उसकी जगह वो 12.5% शेयर हो जाएगा। ये नहीं है कि वो 5 शेयर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा,
शेयर 4 ही रहेंगे, वो एक शेयर में डिवाइड हो जाएगा। 2 डॉक्टर्स है तो 25% जो डॉक्टर को मिलना, एक को उसकी जगह 2 को 12.5% मिलेगा। ऑब्वियसली वाइफ एक ही होगी इसलिए उसको पूरा मिलेगा। देयर कैन नॉट बी 2 वाइफ्स नाउ। और ये अगर 4 आदमी नहीं है तो इनके जो भी हेयर्स है जो उसमें मेंशन्ड है उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर क्लास 1 में कोई भी हेयर नहीं है, नॉर्मली अलाइव एट द टाइम ऑफ डिमाइज ऑफ द पर्सन, तब प्रॉपर्टी जाएगी पिता। देखिए पिता की विडंबना, जिसने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और सारा खर्चा जिसने उठाया, उसके एजुकेशन, मैरिज एक्सेट्रा सब चीज का, लेकिन उसका नाम क्लास 1 ईयर्स में नहीं है, उसका नाम है क्लास 2 ईयर्स। यदि कोई आदमी एक्सपायर कर जाता है, यानी सन अगर एक्सपायर करता है तो उसका फादर अगर अलाइव है तो क्लास 1 में फादर का नाम नहीं है, उसको 1 पैसा भी नहीं मिलेगा अगर क्लास 1 के चारों ईयर्स मौजूद है, सारे ईयर्स अगर मौजूद है। उसके बाद जब वो सब नहीं है तब जाके फादर को हिस्सा मिलेगा लड़के की प्रॉपर्टी में। यह विडंबना है। इसके बाद में आप देखिए पोती की बेटी, पोती का बेटा, बहन, भाई, द्वितीय की बेटी, द्वितीय का बेटा, पिता का बेटा, भांजा, भांजी, भतीजी, भतीजा। जब लड़के लड़की या उनके बच्चों में जब कोई नहीं बचा तब फिर नंबर आया भाई बहन का और उसके बाद में नंबर आया उनके बच्चों का, यानी भांजा भांजी और भतीजे भतीजों का। फिर फादर की मदर यानी दादा दादी, फादर के बाद में दादा दादी। ऑब्वियसली जब फादर का नंबर 2 में है तो दादा दादी बाद में होनी है। उसके बाद बुआ, चाचा, फिर नानी, नाना और मौसी, मामा। क्लास 2 में काफी दूर तक के जो रिलेटिव्स है उनको कवर कर लिया गया है। लेकिन इतने रिलेटिव्स कवर करने के बाद भी यदि कोई भी रिलेटिव नहीं बचता है किसी का, ऐसा होता है, इट्स नॉट इमेजिनरी, समटाइम्स इट हैपेंस कि दूर दूर तक कोई रिलेटिव नहीं है। उस अवस्था में क्या होता है, इफ नन ऑफ द अबव हेयर इज अलाइव देन प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड बाय एग्नेंट एंड कॉग्नेंट। एग्नेंट मीन्स 2 person related by blood or only through male, फादर ब्रदर कजिन्स, सब एग्नेंट की पोजीशन में आते हैं। और कॉग्नेंट मतलब 2 person related by blood, जो ब्लड रिलेशन होना जरूरी है थ्रू फीमेल, यानी मदर के साइड के जो कजिन्स हैं, मदर सन कजिन ब्रदर, वो सब क्लास 3 एंड क्लास 4 में आते हैं। यानी फादर के भाई के लड़के और मदर के भाई के लड़के, या वो क्लास 3 एंड 4 में आते हैं। और इसके बाद में तो ये हुआ क्लास 1 2 3 4 के हिसाब से डिवीजन। और एग्जैक्टली हिंदू सक्सेशन एक्ट में जिस तरह से टेबल बनाई हुई है, एक शेड्यूल बनाया हुआ है, उसी हिसाब से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। उसमें कुछ भी कम बेसी नहीं किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। चाइल्ड बॉर्न ड्यू टू लिव इन रिलेशन इज लेजिटिमेट चाइल्ड। लिव इन रिलेशन, यू मस्ट बी अवेयर, बहुत ही कॉमन होते जा रहा है। कोर्ट से भी, बॉम्बे हाई कोर्ट वगैरह ने भी इसको मान्यता दे दी है कि बिना शादी के अगर मेल और फीमेल एक साथ रहते हैं तो वो लिव इन रिलेशन है। और अगर लिव इन रिलेशन में कोई इश्यू हो जाता है, कोई बच्चा हो जाता है, तो वेदर ही इज एंटाइटल्ड टू सक्सीड और नॉट एज पर, तो कोर्ट्स के डिसीजन हुए हैं कि सच पर्सन विल बी इलेजिटिमेट चाइल्ड। जब शादी को, जब ये रिलेशन को ये कोर्ट वैलिड मान रहा है तो ऑब्वियसली इस रिलेशन से होने वाले बच्चे को भी उसका अधिकार मिलना चाहिए। एन इलेजिटिमेट चाइल्ड हैज आल्सो राइट इन फादर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। हाँ जी, अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो उसका भी फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में राइट है, बट फादर की एचयू प्रॉपर्टी में उसका कोई राइट नहीं है। There is no right in the inherited property of the father. He is right only in the self-acquired property of father. Adopted sons are also treated in par with the natural born sons. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक ही कैटेगरी में आते हैं और सही भी है, एक ही कैटेगरी उनकी होनी चाहिए। Adopted son और adopted daughter, I mean adopted child.
prior to Hindu Succession Act 2005 came into the force, the married woman had no right in the parental property. But now the married daughter is co-partner and has right in her father's property. This is a significant change in 2005. If the widow remarries after the demise of her husband, widow हो गई है और उसके बाद में हस्बैंड की डेथ के बाद में, विडो होने के बाद में, आई एम सॉरी, she has still right to inherit her late husband's estate. Obviously, means widow has full right to share the property left by the husband, to inherit the property left by the husband. Stepmother has full right in her husband's estate. Even she becomes characterless after the demise of her husband. हाँ जी, अगर स्टेप मदर है और अगर हस्बैंड की डिवाइस के बाद में इट इज प्रूव दैट शी हैज लॉस्ट हिज कैरेक्टर, स्टिल हस्बैंड के स्टेट में शी कैन इनहेरिट. चाइल्ड इन whom has full right of inheritance which a son born in the estate left by his or her father. पेट में जो बच्चा है उसको भी इनहेरिटेंस का पूरा राइट है फादर की प्रॉपर्टी में. और स्टेप मदर has full right in her stepson's property after demise or of her stepson. लड़का की डेथ हो गई है और लड़का का स्टेप सन है तो उसकी प्रॉपर्टी में स्टेप मदर का पूरा राइट है. If son murders his father, or sometimes it happens, friends, not always, but if son murders his father, he also loses his right of inheritance in the father's property. 2-4-5 साल में ऐसी घटनाएं कभी घटती है, आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे. उस अवस्था में उसका राइट खत्म हो जाता है फादर की प्रॉपर्टी में. A divorcee lady, divorce has become very common nowadays. Off and then आप लोग डाइवर्स क्या सुनते होंगे, तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि डाइवर्सी लेडी का क्या राइट है. A divorcee lady has no right in her late husband's property, and similarly a divorcee man has no right in his late wife's property. डाइवर्स होने के बाद में एक दूसरे की प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं होता, because as soon as divorce takes place, the husband and wife relation terminates immediately. A married lady married to a Hindu has no right of inheritance of her late husband's property after divorce, because as soon as the divorce takes, sorry, it is I'm continuing repeating. So friends, हिंदू सक्सेशन के हिसाब से जो इनहेरिटेंस है वो ऑटोमेटिक है. और अगर कोई आदमी अपने विल बना लेता है किसी प्रॉपर्टी के लिए तो वह चाहे जिसको अपनी विल के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है, जिसकी भी उसकी इच्छा हो. ऑटोमेटिकली ये इनहेरिटेंस, इट डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ द पर्सन हु हैज मेड द विल. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड द विल. और किसी भी लड़के का, लड़की का, वाइफ का कोई भी राइट नहीं रह सकता है प्रॉपर्टी में अगर विल बना के किसी को दे दी जाती है. तो ये जो अभी तक बातें बताई थी सक्सेशन की, ये थी सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेल हिंदू. अब मैं बताने जा रहा हूं सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल हिंदू. द सन्स एंड डॉटर्स एंड हस्बैंड. सबसे पहले अगर किसी फीमेल की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी के जो बेनिफिशियरी होते हैं, जो इक्वली डिवाइड होती है, वो है लड़का, बेटी और हस्बैंड. यस, किसी भी औरत की मृत्यु होने के बाद में उसके बेटे और बेटी और हस्बैंड में इक्वली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी. और अगर लड़का या लड़की नहीं है, माने एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनके जो लड़के और लड़की है उनका शेयर उसमें स्वतः हो जाएगा. अगर ये कोई भी नहीं बचे हैं तो हस्बैंड के जो बेनिफिशियर्स हैं उनको मिलेगी सबसे पहले प्रॉपर्टी. पति के जो उत्तराधिकारी हैं उन्हें मिलेगी. उसके बाद में उसके ओन माता पिता, अगर ये लोग भी कोई नहीं है तो लेडी के जो माता पिता है उनको मिलेगी. और
अगर वो भी मौजूद नहीं है तो माता और पिता के उत्तराधिकारियों को प्रॉपर्टी मिलेगी। माता पिता के उत्तराधिकारी को प्रॉपर्टी मिलेगी। मुस्लिम सक्सेशन, शॉर्ट में बताना चाहता हूं मुस्लिम सक्सेशन भी। मुस्लिम लॉ रिकॉग्नाइज टू टाइप्स ऑफ heirs, sharers and residuaries. Heirs are the ones who are entitled to a certain share in the deceased property, and residuaries would take up the share in the property that is left over after the heirs have taken their part. Heirs के बचने के बाद जो बचता है वो रेसिड्यू में जाता है, वो रेसिड्यू है। Heirs are 12 in numbers. ये 12 तरह के होते हैं जिनका जो एज ए शेयर्स उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, और हस्बैंड, वाइफ, डॉटर, फादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंडफादर, सिस्टर, कॉन्सेक्यूटिव सिस्टर, मतलब सेम फादर। मदर अलग हो सकती है, फादर सेम है, और हैविंग सेम मदर, मदर एक ही, फादर अलग हो सकते हैं, और हैविंग सेम मदर, ग्रैंड मदर, ये सब जो है शेयर्स में आते हैं। ये सब प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी हैं। एंड ऑल द रेसिड्यू आर रिलेटेड टू द डिजीज थ्रू मेल्स ओनली आर रेसिड्यूज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मुस्लिम्स में। मुस्लिम लॉ के अनुसार इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है वो, या जो भी राइट होता है वह बर्थ राइट नहीं होता है। वह कोई भी बच्चा, जैसे कि हिंदू एचयूएफ में बच्चा जन्म पे उसकी जॉइंट फैमिली एचयूएफ में उसका राइट हो जाता है, लेकिन मुस्लिम लॉ के हिसाब से पैदा होते ही कोई राइट नहीं होता है। जब आदमी की मौत होती है उसके बाद ही सबको अपना राइट मिलता है। ये बेसिक डिफरेंस है। लेकिन फीमेल्स को सारा राइट रहता है मुस्लिम में, और उनमें कोई भी मैन और वुमेन में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। और किसी भी डेथ होने के बाद में कोई भी लड़की या लेडी हो तो उसे उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। क्वेश्चन उठता है कि आइदर एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ और एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट, अगर कोई भी दूर का नजदीक का जितने भी क्लास 1, 2, 3, 4 शेयर शेड्यूल्स में मैंने रिश्ते बताए हैं, या मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो शेयर्स और रेसिड्यू के बारे में बताया है, खुदा न खास्ता इनमें से अगर कोई भी नहीं बचता है हिंदू का या मुसलमान के, तो उस प्रॉपर्टी का क्या? तो वो प्रॉपर्टी आपको हमको नहीं मिलेगी, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेगी। सरकार उस प्रॉपर्टी का अधिग्रहण कर लेगी अगर किसी को भी कुछ नहीं मिलता है तो। विल, तो ये सक्सेशन के बारे में बताया मैं। अब मैं बता रहा हूं विल के बारे में। लोगों में एक कंफ्यूजन है कि जब लड़का पैदा होता है तो बोलते हैं कि वाह बेटा हो गया है, अब तो सारा माल इसी का है, सब तो इसी को मिलना है। वो जो बड़ा होता है, लोग दूसरे लोग आस लगाए होते हैं कि जब ये बड़ा हो रहा है तो इसके बाप का सारा माल उसी को मिलना है। और बहुत हद तक बेटे के मन में ये आ जाता है कि भी पिता का जो है वो मेरा ही है। ये हमारे हिंदू लॉ में, हमारे हिंदू सोसाइटीज में ये कल्चर है। किंतु दोस्तों कानून कुछ और कहता है। बाप की जो प्रॉपर्टी है, अगर वह विल कर देता है बिना लड़के को कुछ भी दिए, तो लड़के को ठेंगा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो चाहे तो किसी को भी वो हो सकता है वो सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे दे, लड़की को दे दे, अपनी वाइफ को दे दे, लड़के को कुछ न दे। तो इसलिए जो भी यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो यह ना सोच लें कि उनका ऑटोमेटिक राइट है अपने फादर की प्रॉपर्टी में। या इफ द फादर हैज नॉट मेड एनी विल, तो जरूर लड़के का जो शेयर है वो भी पूरा नहीं, मदर के साथ, डॉटर के साथ शेयर होने के बाद जो है उसको मिलेगा। लेकिन अदरवाइज विल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि लड़के को एक भी पैसा मिले। इसलिए हर यंगस्टर को अपने बूते के ऊपर अपना करियर बनाना चाहिए, बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर अपने करियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। bequeath of property through will, relative or non-relative beneficiary. Beneficiary can be relative or non-relative. रिलेटिव में किसी को भी प्रॉपर्टी दी जा सकती है एज आई टोल्ड, और नॉन रिलेटिव अगर रिलेटिव नहीं हो तो भी प्रॉपर्टी को विल के द्वारा दिया जा सकता है। ही कैन बी फ्रेंड, ही कैन बी स्टाफ, और ही कैन इवन बी एनी आउटसाइडर। इसलिए विल में सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप किसी को भी प्रॉपर्टी दी जा सकती है और कितनी भी दी जा सकती है, कोई इक्वल शेयर की बात नहीं है। कंप्लीट डिपेंड करता है
टेस्टेटर की यानी द पर्सन हु मेक्स द विल उसकी इच्छा पर इक्वल और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आई हैव टोल्ड इट ऑलरेडी। क्रिएशन ऑफ एचयूएफ, विल के द्वारा एचयूएफ भी क्रिएट हो सकती है अगर विल में ऐसा प्रोविजन कर दिया जाए तो, और विल के द्वारा ट्रस्ट भी क्रिएट होते हैं। विल के मल्टीपर्पज यूज है और विल के द्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट भी क्रिएट किया जा सकता है। बहुत से लोग लिख देते हैं विल में कि हमारे बाद में इतना लाख रुपया या इतना करोड़ रुपया ट्रस्ट को दिया जाए या एक ट्रस्ट बना के ये चैरिटी का काम किया जाए। तो विल के द्वारा बहुत सी चीजें हैं जो हो सकती है। पर ये विल बनती कैसे है या विल के जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है? टेस्टेटर मीन्स द पर्सन हु मेक्स द विल, बेनिफिशियरी मीन्स द पर्सन टू whom the property is given, is transferred, is shared, executor बनाने वाले ने विल बना दी, मिलना है उसको मिलेगा, लेकिन वो देगा कौन? जिसको लेना है वो अपने आप थोड़ी ले सकता है, उसका किसी को तो राइट होना चाहिए। बिकॉज कि पता ही नहीं है कि बिल जो है वो किसको मिलेगी और कैसे होगा, तो इसके लिए एग्जीक्यूटर विल में बनाना पड़ता है, बनाना चाहिए। हालांकि एग्जीक्यूटर का लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है एज पर लॉ, बट सुविधा के लिए इफ द नेम ऑफ द एग्जीक्यूटर इज नॉट मेंशन्ड विल नॉट बी इलीगल, लेकिन एग्जीक्यूटर जरूर बनाना चाहिए जिससे बाद में कोई तरह की लिटिगेशन नहीं हो। और एग्जीक्यूटर जो है वह एक तरह से ट्रस्टी हो गया बिल का एक तरह से, और वह जो भी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में बिल में लिखा हुआ है कि किसको क्या कितनी देनी चाहिए वह उस हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, a letter of administration can be obtained from the court of competent jurisdiction in cases where the testator has failed to appoint an executor। जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं अगर मान लीजिए किसी ने एग्जीक्यूटर नहीं बनाया है तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोर्ट के द्वारा किया जाता है। क्या एग्जीक्यूटर बनाया भी है बट द एग्जीक्यूटर रिफ्यूज टू एक्ट और ये डाइड बिफोर द टेस्टेटर डाइड, इन सब केस में फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करके ऑप्टेन करके फिर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। विटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग ए विल। कोई भी विल के लिए 2 विटनेस होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर विटनेस नहीं है तो विल कैन बी ट्रीटेड इलीगल बाय द कोर्ट। प्रोबेबली नॉट कंपल्सरी एक विटनेस डॉक्टर होना चाहिए और एक दूसरा जो विटनेस है वो आइदर रिलेटिव, वेरी क्लोज रिलेटिव, कॉमन रिलेटिव जिस पर कि घर वालों का विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, या फ्रेंड हो, फैमिली फ्रेंड जिस पर भी सारे घर वालों का विश्वास हो, ऐसे आदमी को विटनेस बनाना चाहिए जिससे कि हर आदमी का कॉन्फिडेंस होने से विल को चैलेंज नहीं करें कि ये गलत विल है। और प्लेन पेपर और रजिस्ट्रेशन, बहुत सा कंफ्यूजन है कि विल रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जी नहीं, एज पर लॉ विल कैन बी ऑन ए प्लेन पेपर although it can be registered if you require। रजिस्ट्रेशन होने से बकायदा रजिस्ट्रार और ऑफिसर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विल का, 2 विटनेस साथ में रहेंगे। लेकिन अगर प्लेन पेपर में भी विल है, प्रॉपर्टी रिटेन है और प्रॉपर्ली विटनेस की भी है तो इट इज ए वैलिड विल। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में विल होनी चाहिए? इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला? नॉर्मली द विल मेकर यानी कि टेस्टेटर जो लैंग्वेज जानता है उसी लैंग्वेज में विल होनी चाहिए। दैट शुड बी द लैंग्वेज शुड बी यूज्ड बाय द टेस्टेटर। अगर विल इंग्लिश में लिखी गई है एंड द टेस्टेटर डजंट नो द इंग्लिश, द विल मेकर डजंट नो द इंग्लिश, even then it can be a valid will provided it should be mentioned in the will that a person whose name should be there, and if he say that he has explained the contents of the will to the maker of the will and his acceptance should be there that yes he has understood the contents explained by so and so, then it is a valid will. But if it is not mentioned and it is written in English and the testator doesn't know the English and it was not explained to him, it can be treated as, it can be challenged and it can be treated as an invalid will in the court of law. Signature, the testator should sign the will and the date of the will should be mentioned कि किस तारीख को will बनाई गई है वो mention होना चाहिए। And the testator should be of sound mind। जब उसने will बनाई है उस समय वह
एकदम साउंड माइंड से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डीप डिप्रेशन में है या that time he is of unsound mind. If he prove, then will can be challenged in the court of law and be treated as invalid. और डॉक्टर या डॉक्टर का सर्टिफिकेट साथ रखने से ये चैलेंज में आप बोल सकते हैं कि उस समय जब बिल बनी थी तो डिजीज था, ही वाज इन साउंड स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज ये डॉक्टर सर्टिफिकेट ये कह रहा है या इट हैज बीन साइंड बाय द डॉक्टर, द फैमिली डॉक्टर, इट हैज बीन विटनेस्ड बाय द फैमिली डॉक्टर, सो द पर्सन वाज ऑफ साउंड माइंड। Secrecy and confidence. Will should be kept very secretly and in a very confidently. Because कि अगर लोगों को पता पड़ जाए बेनिफिशियरीज को कि बिल में क्या है और किसी को कम किसी कर दिया जाता है, इक्वल देना तो गलत बात है, उस समय हो सकता है कि कोई डिस्प्यूट वगैरह हो जाए, तो इसलिए बड़ा ये बिल सीक्रेट और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और नॉर्मली बिल या तो अपने जो भी रेगुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट्स हैं, फैमिली चार्टर्ड अकाउंटेंट, फैमिली एडवोकेट्स या फैमिली फ्रेंड्स, जहाँ विश्वास हो कि कहीं भी बात इधर उधर नहीं होगी, वहाँ ये बिल को लोग रखवा देते हैं। हमारे पास कई लोगों की बिल पड़ी रहती है। और लास्ट बिल, एक लोगों को ये कंफ्यूजन है कि बिल अगर बना लिया बाद में अगर चेंज करनी हो तो फिर दिक्कत आती है, हम कैसे चेंज करेंगे, प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है, बेनिफिशियरी के लिए विचार बदल जाते हैं। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी जो लास्ट बिल है, that will be the final will. You can change the will several times, and you just mentioned that this is your last bill and all other bills are revoked. तो आपकी वो बिल जो है फाइनल मानी जाएगी, तो इसलिए बिल बनाने में कोई विशेष प्रॉब्लम भी नहीं है। और आप अगर चेंज करते हो तो उसमें भी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। प्रोबेट, it is very important to know about the probate. What is probate? A probate means the certified copy of the will in plain language. Otherwise, a probate is the grant of administration of the state by the court of competent jurisdiction on the basis of will. It can be granted only to an executor. Obviously, if there is an executor, will apply for the probate, not the beneficiary. The executor will apply for the probate to the court. So, probate means certified copy of the will. Will may be required to be probated as most of the government agencies, banks, institutes, etc. ask for probate for transferring funds, share, mutual funds, units, etc. in the name of the beneficiary. They don't transfer if probate is not given to them. It is a big problem. However, in some of the states, there is no requirement of probate. Probate duty differs from state to state. In Canada, it is 50,000, irrespective of the value of the market value of the assets left by the deceased. कोई भी वैल्यू हो, मैक्सिमम स्टाम्प ड्यूटी जो है, प्रोबेट ड्यूटी जो है वो 50,000। बट इन हैदराबाद फॉर एग्जांपल इट इज 4%। इन डिफरेंट स्टेट इट इज डिफरेंट रेट, कहीं 2%, कहीं 1%, कहीं 3%। हैदराबाद इट इज मैक्सिमम। अगर किसी ने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू की प्रॉपर्टी को छोड़ा है, 40 लाख की प्रोबेट ड्यूटी लगती है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बट ये अमाउंट भी सेव किया जा सकता है यदि टेस्टेटर हैज आइडिया अबाउट दिस। वो कैसे? अगर मान लीजिए कोई आदमी हैदराबाद में रहता है परमानेंटली एंड ही मेक्स हिज विल, ही नोज कि आफ्टर डिमाइज इट हैज टू बी प्रोबेटेड एंड उसके जो सक्सेसर्स हैं, उसके जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको बहुत बड़ी प्रोबेट ड्यूटी देनी पड़ सकती है। He can do one thing. He can come to Calcutta and open a bank account here or open a bank locker here. And if he is having a bank locker or bank account here, and after the demise, if the executor files a probate in the Calcutta High Court, it can be, because by virtue of having a bank account and a bank locker, he has established the jurisdiction of Calcutta. और इस तरह से उसका लाखों रुपया जो है टैक्स प्रोबेट ड्यूटी से बच सकता है। In case probate is applied, a notice shall be given to all the beneficiaries by the court, and after getting NOC from all the beneficiaries, court will grant probate. ये
प्रोवेट होने से ये भी एक फायदा है कि बेनिफिशियरी में कोई डिस्प्यूट है कि नहीं, कोई किसी को विल को चैलेंज करता है कि नहीं, वो सब सामने आ जाती है और चीज क्लियर हो जाती है। फ्रेंड्स, ये दिखा रहा हूं आपको, एक सेकंड जरा वेट कीजिए। कैसे मुझे बना दिया। दोस्तों देखिए, आदमी कबूतर बन गया 1 सेकंड, पता ही नहीं पड़ा उसका क्या हुआ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। आदमी कबूतर बन गया, जान कभी भी जा सकती है। सो फ्रेंड्स, लाइफ इज अनसर्टेन एंड नो वन नोज दैट व्हेन द लास्ट ब्रेथ विल कम आउट। अंतिम सांस कब निकल जाएगी हम लोग कोई नहीं जानते। सो वी ऑल शुड मेक विल एट द अप्रोप्रिएट टाइम। विल बनानी बहुत जरूरी है। फॉर मंथ्स बैक I made a video in my YouTube channel on will and advised that at least after attaining the age of 50, the will should be made, although there is no benchmark. And you will not believe, friends, I got so many cases of will drafting. And those who were confused, were hesitating to make such will, were approached me and requested me to make a will. So therefore, friends, ये जो मैंने अभी सीन दिखाया, इससे क्लियर हो रहा है कि विल जो है इसका कोई पता ही नहीं है, मौत का कोई पता ही नहीं है। इसकी विल जो है वो जरूर बनानी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बता रहा हूँ। 35 साल पहले मेरी एक जो मेड सर्वेंट है, जो कि 15 साल की उम्र में विडो हुई थी और हमारे यहाँ ही काम कर रही थी, और हमारे यहाँ 82 साल की उम्र में वो एक्सपायर की। तो करीब करीब वो मेड सर्वेंट ना होके घर के सदस्य जैसी ही थी, करीब करके घर की सदस्य बन गई थी। 35 साल पहले उन्होंने मुझे कहा कि मेरी विल बना दो। मैं चकराया। उनके पास ऐसा कोई बहुत कुछ नहीं था, और थोड़ा बहुत सामान होगा, थोड़ा बहुत रुपये होंगे तो उसने नौकरी से बचाए हैं या उसके हस्बैंड को छोड़ के गए थे। उसने कहा कि और उसके कोई भी बेटा बेटी दूर दूर के रिश्तेदारों में सिर्फ उसके 2 भतीजे थे, वो भी उसके हस्बैंड के ब्रदर के बच्चे। उसने कल मैं जब चली जाऊंगी तो ये जो पैसा है, जो थोड़ा बहुत भी मेरे पास है, मेरे भतीजे लड़ेंगे आपस में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद में ये लोग शांति से रहे। देखिए, अनपढ़ औरत का 35 साल पहले का विजन, मैंने वो विल बनाई, और अभी जब वो 2-4-5 साल बाद पहले एक्सपायर हुई तो उनके भतीजों में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, और विल के हिसाब से उन्होंने जो भी छोड़ा था उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो हम लोग के जो क्लाइंट्स हैं, आप लोग जो सब हैं, सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो इसलिए विल बनाने से देखिए इस तरह के लिटिगेशन जो है, इस तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं, उसके होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। यही इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता था। HUF मीन्स
Hindu undivided family consisting of husband, wife, sons, and daughters. There are primarily two branches of in HUF, Mitaksha and Deabaga. In Bengal and some part of Assam, Deabaga schools of thoughts. The families are governed by Deabaga schools of thoughts. And in other part of India, particularly North India, the Hindu families are governed by Mitaksha school of law. Friends, in Deabaga, the children get right after the demise of the father, but in Mitaksha, as soon as the child is born, he gets right in the HUF property. That is the basic difference in Deabaga and Mitaksha school of law. One important aspect I would like to mention कि अगर कोई बंगाली फैमिली, फॉर एग्जाम्पल कोई बंगाली फैमिली विच इज गवर्न बाय देहाबागा, अगर राजस्थान में परमानेंटली कई सालों से रह रही है और वह अगर ऑप्ट करना चाहे कि हम देहाबागा से मिताक्सा स्कूल ऑफ थॉट्स में आना चाहते हैं, वी कैन ऑप्ट, एंड वाइस वर्सा, कि अगर कोई मारवाड़ी फैमिली बंगाल में रह रही है और वो अगर चाहे तो हम देहाबागा से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आराम से देहाबागा स्कूल ऑफ थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह एक कंसेप्ट है। ऑब्वियसली लोग मिताक्सा में ही ज्यादा कन्वर्ट होना चाहेंगे, देहाबागा में ही कन्वर्ट होना चाहेंगे। और एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो 2005 में आया था कि 2005 के पहले HUF में जो फादर की यानी जो लड़कियां होती थी, बेटियां होती थी, शादी के बाद उनका कोई राइट नहीं होता था फादर की HUF प्रॉपर्टी में। यू ऑल मस्ट बी अवेयर। पर 2005 बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया और उसके हिसाब से अगर फादर कोई HUF जो प्रॉपर्टी है, शादी के बाद भी लड़कियां जो है वो को-पार्टनर बन जाती है शादी के बाद, जबकि पहले वो को-पार्टनर नहीं बनती थी और इसलिए उनका पूरा राइट रहता है। ये बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद में बहुत से लोग जो हैं इस डर से कि भी अब HUF लड़कों की जब शादी हुई थी हमने तो उन्हें पूरा दहेज दे दिया, अभी भी उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा रहेगा, तो बहुत से लोग इमूल प्रॉपर्टी में HUF में नहीं लेते हैं, या जो ली हुई है उसे भी बेच के लिक्विड करके चाहते हैं कि किस तरह से ये कैपिटल कम की जाए। ये खैर अपना सोच है, अपने विचार है, ये बहुत चेंज है। वैसे आई एम नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट बिकॉज आई गॉट 2 डॉटर्स ओनली, नो सर, तो इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने का है। बट अदरवाइज लेकिन हाँ, इस अमेंडमेंट से बहुत तरह के चेंजेस जो है अपनी प्लानिंग में लोग कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी का कैसे हो कि जैसे लड़की को बाद में ना मिले। और इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि वो ये है कि मान लीजिए आपकी HUF प्रॉपर्टी, आपका जो बिजनेस है वो HUF में, HUF इज द प्रोप्राइटर ऑफ ए शॉप एंड ओनली बिजनेस ऑफ द फैमिली, फादर एक्सपायर्स, बड़ी लड़की है, सिविल बिकम करता, अब वो उस लड़की जो है वो उसकी प्रॉपर्टी होगी एक तरह से इनडायरेक्टली, बिकॉज करता का सारा राइट रहता है, वो उस बिजनेस को करेगी। अब फादर का लड़का है, वो छोटा है, मदर है, और मान लीजिए वो लड़की ग्रीडी है या उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, तो रियली ये फैमिली जो है ये प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। मेरे ख्याल से अगर सन हो तो भले वो छोटा भी हो, कर्ता का राइट उसी को कोर्ट को देना चाहिए था। ट्रस्ट, there are mainly several types of trusts, but important types of trust I will only mention: non-discretionary trust, discretionary trust, will trust, minor child trust, charitable trust. Non-discretionary trust means where beneficiary and their shares are known, tax rate applicable to the trust are that of individuals or AOP as the case may be. Discretionary trust where either the shares or the beneficiary are not known and the rate of tax is the maximum marginal rate. Minor child trust. A trust can be created for minor sons or daughters, and the income of such trust is accumulated and given to the beneficiary only when they become major or get married as per terms in the deed. Such trusts are taxed as per rate applicable to the individuals. इसके काफी जजमेंट्स भी हैं कि ऐसे ट्रस्ट में जो एक्यूमुलेटिव ट्रस्ट होते हैं उसमें टैक्स भी जो है इंडिविजुअल रेट के हिसाब से लगेगा, उसका रिटर्न भी जाएगा अलग से। विल ट्रस्ट,
विल के द्वारा ट्रस्ट भी बनाया जा सकता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी में कहा है, और ट्रांसफरिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। और विल के द्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाया जा सकता है और बनाते हैं लोग। ट्रस्ट कैन आल्सो बी क्रिएटेड फॉर एन अनबॉर्न चाइल्ड और वुड बी वाइफ। One of the best ways to transfer property to the legal heirs is settling a family trust. Trust can be created during lifetime and also after demise through will. और आजकल लोग ट्रस्ट इसलिए भी बनाते हैं कि शेयर्स वगैरह में कई प्रॉब्लम आ रही है कि उसकी मार्केट वैल्यू लेनी है, कई बार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, इसलिए बड़े ग्रुप जो हैं अपना सारा का सारा शेयर्स वगैरह ट्रस्ट में देके ट्रस्ट के द्वारा कंट्रोल करते हैं। और अभी जो पोजीशन है कि हो सकता है कि बाद में इनहेरिटेंस टैक्स लग जाए, कई सालों से ये अफवाह उड़ रही है, तो ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी है उसमें इनहेरिटेंस टैक्स से भी बचा जा सकता है। तो ट्रस्ट के बहुत से यूज हैं। गिफ्ट, गिफ्ट के द्वारा ड्यूरिंग लाइफ टाइम आदमी अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी, किसी भी रिश्तेदार को या दे सकता है वैसा, और सेक्शन 56 से बचते हुए, ध्यान में रखते हुए, जिससे कि टैक्स भी नहीं लगे। और लेकिन लोग अपनी प्रॉपर्टी लाइफ टाइम में इवन अपने लड़के और लड़की को भी देना नहीं चाहते हैं, इवन वाइफ को भी देना चाहते हैं। बहुत एक लिमिटेड अमाउंट की बात अलग है, लेकिन वो सारी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कल जब वो बूढ़े हो जाएंगे और उसके लड़के लड़कियां अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा। तो ये बात बहुत कुछ सही भी बैठती है, बहुत कुछ माने में। रेमंड्स इतना बड़ा ग्रुप है, सिंगानिया, आज रेमंड का जो लड़का है उसने अपने बाप को निकाल बाहर कर दिया और सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठा है। एंड उसके फादर जो है एक बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं। तो ये सब जब बड़े बड़े घरानों में घटनाएं होती हैं तो बाकी जो साधारण घर है उनका तो सोचना लाजमी है। इसलिए गिफ्ट से लोग नॉर्मली छोटे मोटे अमाउंट की बात अलग है, बहुत ज्यादा अमाउंट देके सारा जो उनके पास से देके अपने आप को खाली नहीं करना चाहते हैं। और हालांकि कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ के टाइम में भी गिफ्ट की जा सकती है, अगर आदमी जस्ट मरने वाला हो और उस समय भी वो गिफ्ट करे तो ये भी गिफ्ट जो है वो टैक्स से फ्री है, इस प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स नहीं लगना है। तो टाइम है तो बरखा, कैन आई कंटिन्यू? 6:30 है। बरखा, Yes, sir. Yes, sir. You can continue, sir. थैंक यू। रिसेंटली मैंने एक विल ड्राफ्ट की थी, उसमें टेस्टेटर ने अपनी वाइफ के लिए बहुत ही कुछ कम दिया, बाकी सब अपने ब्रदर को दे दिया, तो उसमें कोई लड़का लड़की नहीं है। इसका कारण ये है कि वह चाहता है कि वो सोचता है कि अगर उसको कुछ हो गया उसकी डिमाइज के बाद में, जब प्रॉपर्टी सारी वाइफ को मिल जाएगी तो वाइफ अपने भाई और भाभीियों को, अपने पीछे वालों को सारा पैसा लुटा देगी, इसलिए वह उनको कुछ नहीं दे पा रहा है। हाँ, वाइफ के लिए पूरा अरेंजमेंट उसने कर दिया है कि जिससे वाइफ को भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए, विल बनाते समय लोग कई तरह की बातें ध्यान में रखते हैं और जो कि सक्सेशन में संभव नहीं है, इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग विल बना चाहते हैं। मैं आपको एक अजीब सा वाकया बताता हूँ जो कि सत्य है। मेरे क्लाइंट, कई साल पहले की बात है, वो मेरे पास आए और अपने विल बनवाए। विल में उन्होंने क्लॉज में पर्टिकुलरली लिखवा दिया, उनके 5-6 लड़के थे, कि उसका जो सेकंड लड़का है, सेकंड सन, वह उसके अर्थी को कंधा नहीं देगा, विल में लिखवा दिया। और जितने भी रिचुअल्स हैं वो किसी भी रिचुअल्स में वो भाग नहीं ले सकता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, लड़के के लिए बहुत ही शर्म की बात है जब हजारों लोगों को पता पड़ता है कि बाप ने उसको मना कर दिया रिचुअल्स में शरीक होने के लिए। वो उसके लिए मरने के बराबर होता है, चाहे कितना भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन बाप जब मरता है तो बेटा भी आता है और लोग, और वो पूरे रिचुअल्स भी करता है 99% केसेस में। 1% केस की बात अलग है। तो फादर ने अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो विल के द्वारा निकाला और एक लेसन दिया लोगों को, लड़कों को, कि भाई बाप, और ऐसा क्यों किया कि उस लड़के ने प्रॉपर्टी के कारण कोई एक लीगल नोटिस फादर को भेज दी थी। लड़के को नहीं भेजी थी लीगल नोटिस, बैठ के बातचीत करके मैटर को सटवाना था, लेकिन इसलिए फादर ने भी एक स्टेप उठाया। बहुत लोग खड़े होते हैं और ऐसा स्टेप उठा लेते हैं। तो ये सब है कि विल के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। This inheritance is a very vast topic and I have touched only important aspect which a common man should know. And विल के द्वारा
सक्सेशन के द्वारा बहुत सी टैक्स प्लानिंग भी होती है, और जैसे एग्जाम्पल ऑफ टैक्स प्लानिंग, मैं सीधे टैक्स प्लानिंग में आ जाता हूँ और उसके एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। X dies without will. He has a son, daughter, wife, son's son has left behind property worth 1 crore rupees. X मर गया और उसने पीछे में एक लड़का, लड़की, वाइफ, लड़के की वाइफ, लड़के का लड़का छोड़ गया। अब उसकी एंटायर प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग his wife, son and daughter equally because he has left without will. He had died without will. अगर वो विल बना लेता और इससे, क्योंकि उनके कोई भी तरह के एचयूप टैक्स एसेसिस नहीं है और कोई एचयूप जनरेशन हो जाता, एचयूप क्रिएट कर लेता, तो उसकी तो 1 करोड़ का रुपया वो एचयूप में भी अगर डिवाइड हो जाता तो कई तरह का टैक्स सेविंग हो सकता था, क्योंकि एचयूप में उसको 10 लाख तक तो 20% टैक्स लगना था, तो काफी टैक्स सेविंग उसकी हो सकती थी अगर एचयूप क्रिएट होता विल के द्वारा। तो ये तो टैक्स बेनिफिट है। मान लीजिए एक्स हैड 3 रेसिडेंट फ्लैट एंड 1 फ्लैट ईच गोज टू द लीगल हेयर who is already having 2 residence flat, तो ऐसे केस में नोशनल टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर वो एक फ्लैट अगर एचयूप को दे दे तो उनके पास 2 ही फ्लैट रहेंगे, तो नोशनल टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह की बहुत सी टैक्स प्लानिंग है जो विल बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, और इसीलिए बहुत से लोग जो है कोर्ट के सॉलिसिटर से विल ड्राफ्ट जरूर करवाते हैं, पर वो जानते हैं कि वहाँ टैक्स प्लानिंग जो है उसकी लैकिंग रहेगी, तो वो आके अपने टैक्स एडवोकेट से उसको चेक करवाते हैं या प्लान करवाते हैं और टैक्स प्लानिंग के हिसाब से चेंजेस करवाते हैं। और टैक्स प्लानिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज रिगार्ड द प्रॉपर्टी being related to will or succession is concerned. दूसरा, विल के द्वारा पर्टिकुलर असेट्स अपने सन को या डॉटर को दे सकते हैं कि भाई हाँ, ये पर्टिकुलर चीज इसको देनी है, जो कि सक्सेशन के द्वारा संभव नहीं है, उसके जो इक्वल हिस्से होने हैं, लेकिन विल के द्वारा अलग अलग हिसाब से आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं। Will, succession, trust are all perfect mode for transfer of property, but as per circumstances, as per family relation, as per tax liability, we should advise our clients. और अगर जो क्लाइंट या खुद ये देख रहे हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि उन्हें भी अपनी विल बना लेनी चाहिए और हमें भी उनके एडवाइस देना चाहिए। We should see whether there is any dispute among the family members, what is the nature of business, what is the status, और उसी के अनुसार हमें अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देना चाहिए। We should be very straightforward and frank in advising or in asking our clients about their assets and about their desire. अगर वो पूरी डिजायर हमें नहीं बताएंगे तो हम भी उन्हें पूरी टैक्स प्लानिंग नहीं दे सकते। विल के लिए जो क्लाइंट्स आते हैं वो उन्हें अपना दिल खोलकर हमारे सामने बात रखनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर विल बन सकती है। हालांकि ऐसा बात नहीं कि विल बनने से डिस्प्यूट नहीं होगा, विल बनने पर बाकी वैसे एग्जांपल कम है, विल बनने के बाद भी डिस्प्यूट होते हैं। विदमा बिरला केस एंड विद लोडा, ये तो पूरे इंडिया में फेमस है। इतने बड़े ग्रुप की, इतने बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा बिल बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी देखिए कितना बड़ा डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो ऐसे ऐसे बड़े डिस्प्यूट होते हैं और ये तो बहुत बड़ी चर्चा का विषय था सारी इंडिया में। तो बिल बनाने से डिस्प्यूट नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, परसेंटेज ऑफ डिस्प्यूट मतलब बहुत कम केसेज में डिस्प्यूट होते हैं। बाकी लोग बिल बनने से अपने बाप की अंतिम इच्छा समझते हुए मान लेते हैं, डिस्प्यूट नहीं करते हैं। A question may arise as to what to do if dispute arises during lifetime. अगर लाइफ टाइम में डिस्प्यूट हो गया तब क्या करेंगे? तो उसमें आप गिफ्ट नहीं कर सकते, डिस्प्यूट के माहौल में कौन गिफ्ट करेगा? तो वैसे केस में डीड ऑफ सेटलमेंट के द्वारा डिस्प्यूट सुलझाया जा सकता है और डीड ऑफ सेटलमेंट बनाई जा सकती है और उसके द्वारा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो सकता है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है डीड ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू for giving a passage hearing. I have tried my best to share my knowledge honestly and truly. If you have any query, you can ask right now or you can send me in my website www.incometaxbharatkochar.com. My editorial board will reply your queries promptly. www.incometaxbharatkochar.com. You can read my book, Practical Aspects of Survey and Seizure,
My book contains frequently asked questions and in very simple language. It has been written. It is in very simple language and it is available on Amazon and Book Corporation in Calcutta. Friends, I am writing another book, and that is on this subject, that is succession, will and trust. And I hope it will be published within May. I hope that you all will wish for the success of my new book. And friends, thank you everyone. And if you have any question, you can ask by raising hands or by writing in the chat box. Thank you so much, sir. I request from the audience, if they have any query, please unmute yourself and you may ask your question. Sir, we have 2 to 3 questions, sir. If you are willing, then we can. I can ask the question, sir. Sir, there is a question. There is one question in chat box, sir. If there is no executor, whether beneficiaries can apply for probate? So you are muted, sir. Please unmute yourself. Beneficiary will have to apply for the administrator to the court, and the court will appoint an administrator, and only then the proceeding for probate can be started. But beneficiary cannot apply for the probate, because how it can be decided whether they are the genuine beneficiary or not? The court will decide through probate. I'm seeing here 2 people have raised their hand. Please unmute yourself, and you may ask the question. Ratan Kumar Goyal ji, do you want to ask something? कोचर साहब नमस्कार. हाँ नमस्कार. एक्चुअली एचयूएफ क्रिएट करने का डेट एक्चुअल क्या है? किस डेट में एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं? एचयूएफ जो है, इट इज नेचुरल, इट इज नॉट क्रिएटेड. Yes, for the purpose of income tax. I understand your purpose for asking this question is income tax. ये तो HUF जो है, after the child is born, only after that the creation of HUF should be made. Previously it was son is born, but after 2005, when the married daughters are the co-partners, then obviously as soon as the daughter is born, HUF can be created. Not prior to that, not only after the marriage. After just marriage, we cannot create the HUF. We should not. We should. Because HUF में ऐसा है जी कि there should be some co-partner other than the कर्ता. और बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं. हालांकि एक जजमेंट है नरेंद्र नाथ वर्सेज WTO, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें हस्बैंड वाइफ जो है वो HUF, और उसी के बेसिस पर लोग जो है हस्बैंड वाइफ की HUF बना लेते हैं कि भाई उसने कहा, लेकिन उसके फैक्ट्स में नहीं जाते. वो HUF का क्रिएशन नहीं हुआ था, वहाँ पार्टीशन हुआ था, और पार्टीशन होने के कारण चूंकि हस्बैंड वाइफ थे तो वैलिड HUF. आप क्रिएशन की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आप गिफ्ट के द्वारा हस्बैंड वाइफ की HUF बनाते हैं तो इन माय व्यू इट इज नॉट ए वैलिड HUF. सुजीत बल छाबड़ा का केस है, उसमें डॉटर्स को लेके HUF बनी थी, तब ये 2005 का पैटर्न नहीं था, तो उसमें भी कोर्ट ने ये कहा कि नो, इट इज नॉट ए वैलिड HUF बिकॉज द प्रॉपर्टी शुड बी टैक्स इन द इंडिविजुअल हैंड्स. थैंक यू सर. सर एक और क्वेश्चन है आपसे. सपोज दैट वी आर क्रिएटिंग द ट्रस्ट थ्रू द विल एंड द इनकम विल कम, दैट विल बी टैक्सेबल, and must we file the income tax return also of the trust? Of course, whether you are making the trust through will or through gift or whatever may be, वो तो वो आपका सोर्स, वो तो वो कॉर्पस आप कैसे ट्रस्ट का क्रिएट करते हैं, ट्रस्ट कैसे बनती है. और टैक्सेबिलिटी का जहाँ तक सवाल है, it is not concerned with that whether the trust has been made through will or through gift or by any other mode. टैक्सेबिलिटी के लिए तो आपको यही ध्यान रखने का कि जो भी ट्रस्ट में इनकम होगी, इट इज सब्जेक्ट टू टैक्स, नंबर 1. नंबर 2, वो टैक्स जो है इंडिविजुअल रेट पे भी लग सकती है, यूपी की रेट पे भी लग सकती है, हाईएस्ट रेट पे लग सकती है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स. तो मैंने ऑलरेडी बताया भी है कि अगर वो ट्रस्ट में अगर बेनिफिशियरीज आर फिक्स, शेयर्स आर फिक्स, देन उसमें इंडिविजुअल और यूपी की रेट में लगेगी.
अगर माइनर है और वो एक्युमुलेटिव ट्रस्ट है तो उसमें इंडिविजुअल की रेट में लगेगी, लेकिन शेयर और द बेनिफिशियरी आर नॉट फिक्स्ड, देन ऑब्वियसली मैक्सिमम मार्जिनल रेट टैक्स लगेगी। तो इट डिपेंड्स। Okay, thank you, sir. Thank you. केजरीवाल जी, you want to ask something? या नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा डेलिब्रेशन था। मैं राजेश केजरीवाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए राजेश जी। सर आपका डेलिब्रेशन बहुत अच्छा था। एक एक्चुअली फिर भी एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया कि जैसे आपने कहा कि ये विल जो है ये स्टैम्प पेपर पे बन सकती है या इवन ऑन प्लेन पेपर। तो जब अगर मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो तो वेदर इट इज नेसेसरी टू गेट इट रजिस्टर्ड। देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या नहीं, जहां तक विल का सवाल है उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। लीगलिटी ऑफ द विल जो है इट कैन नॉट बी चैलेंज बिकॉज़ इट इज नॉट रजिस्टर्ड, इट कैन बी ऑन अ प्लेन पेपर। पर हाँ, जहां तक सुविधा के सवाल है, फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं राइज हो जाए या कोई बाहर उसको चैलेंज नहीं कर दें, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि विल को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। पर ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि विल होने से उसको आपको करना चाहिए। सर तब जब रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर प्रोबेट की भी जरूरत पड़ेगी या नहीं? प्रोबेट की जरूरत नहीं? देखिए प्रोबेट का जहाँ मैंने सवाल बताया ये अलग अलग स्टेट से अलग अलग है। जैसे बहुत से स्टेट में प्रोबेट जरूरी है क्योंकि उनको ड्यूटी मिलती है, और प्लस गवर्नमेंट के जितनी भी एजेंसीज है वो प्रोबेट बिना कोई भी ट्रांसफर वगैरह नहीं करती हैं, पेमेंट वगैरह नहीं करती है, इसलिए प्रोबेट होना जरूरी हो जाता है। जैसे राजस्थान में प्रोबेट इज नॉट रिक्वायर्ड। अपने कलकत्ता में सर? कलकत्ता में इट इज कंपल्सरी। Oh, it is compulsory to register. तब तो रजिस्टर्ड होगा तब प्रोबेट मिलना आसानी रहेगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं इट इज बेटर, लेकिन आप ऐसा बात नहीं है कि रजिस्टर्ड होने से ही वो प्रोबेट देंगे, ऐसी कोई बात। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। केतन जी। Yes, Ketan ji, you may please unmute yourself. केतन जी। मेरा सवाल ये है, ऑडिबल है ना मैं? हाँ sir. हाँ बोलिए। मेरा सवाल ये है कि एचयूएफ में जैसे कर्ता की जब डेथ हो गई तो एल्डर सन उसका कर्ता बन गया, एल्डर सन की भी डेथ हो गई तो उसका जो बेटा है वो कर्ता बन जाएगा क्या? ये डिपेंड करता है अगर और कोई मेंबर नहीं है तो। एचयूएफ के अगर मान लीजिए खाली एक लड़का ही है, उसमें कोई मैरिड लड़की नहीं है, ये प्रिज्यूम करके चलते हैं, तो ऑब्वियसली अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो उसका जो लड़का वो सीनियर मेंबर इन द फैमिली नाउ, बिकॉज कर्ता की जो मदर है शी कैन नॉट बी द मेंबर, शी कैन नॉट बी कर्ता, तो ऑब्वियसली जो लड़का है वही कर्ता बनेगा। और कर्ता की जो वाइफ है वो भी कर्ता नहीं बन सकती है। लड़का मेरा सवाल ये, लड़के की भी डेथ हो गई तो पोता बन जाएगा क्या कर्ता उसमें? हाँ अप टू पोता तक, उसके आगे नहीं बनेगा। 3 डिग्री तक तो ठीक है, उसके आगे नहीं होगा। इसलिए अगर एचयूएफ में प्रॉपर्टी ली जाए तो वो बेटर रहेगा कि इंडिविजुअल में प्रॉपर्टी हो वो बेटर रहेगा? देखिए लड़कियों का जो हिस्सा हो गया उसको देखते हुए अब एचयूएफ में प्रॉपर्टी लोग नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मान लीजिए इस फैमिली में उसके लड़की नहीं भी है लेकिन लड़के की लड़की हो गई तो एचयूएफ तो कंटिन्यू रहेगी, प्रॉपर्टी भी उसका कंटिन्यू रहेगी, इसलिए लोग अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एचयूएफ सजेस्ट नहीं करते। लेकिन वो क्लेम तो नहीं कर सकती पार्टीशन, लड़की पार्टीशन क्लेम तो नहीं कर सकती। नाउ बिकॉज़ मैरिड गर्ल्स जो है आफ्टर 2005 दे आर को-पास्टर, प्रीवियसली दे वर मेंबर्स, और वो पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकती, बट को-पास्टर कैन क्लेम द पार्टीशन, तो इसलिए मैरिड गर्ल जो है वो को-पास्टर है और वो पार्टीशन क्लेम कर सकती है, इसीलिए दिक्कत आती है। ओके। Anybody else? 3 पार्टीशन रेज हैं, 3 जन और हैं। नहीं सर, वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं। नेक्स्ट इज दीपक कठोतिया जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ दीपक। हाँ प्रणाम साहब, आपने बहुत अच्छा डिलीवरेशन किया, कुछ समझ में भी आया, प्रणाम। हाँ एक चीज थोड़ी पूछनी थी कि जो एचयूएफ अपने है, एचयूएफ के अंदर जो मेरा हिस्सा है कैन दैट बी विल्ड? मैं उसको विल कर सकता हूँ क्या अपने विल में कि मेरे एचयूएफ का ये हिस्सा? एक क्वेश्चन। और दूसरा, एचयूएफ पार्शियली डिस्बर्समेंट हो सकता है क्या? देखिए जहां तक पार्शियली डिस्बर्समेंट का सवाल है, पार्शियल पार्टीशन जो है एज पर हिंदू लॉ इज कंसर्न देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इनकम टैक्स में पार्शियल पार्टीशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। 1973 के बाद से जो भी पार्टीशन हो रहे हैं, अगर पार्टीशन होता है तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज पार्टीशन एज रिगार्ड्स इनकम टैक्स एक्ट इज कंसर्न, और उसमें जो इनकम होगी वो एज इफ की देवर नो पार्टीशन
वो एचयूएफ में ही असेस्ड होगी। अदरवाइज पार्टीशन होने के बाद में सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी मिल गई, उनकी इनकम उनमें जानी चाहिए, लेकिन अब ये और टोटल पार्टीशन होने से ही हो सकता है, पार्सल पार्टीशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इनकम टैक्स। और जहां तक विल के द्वारा एचयूएफ प्रॉपर्टी को जाना चाहिए, देयर इज सम कंट्रोवर्सी, बट इन माय व्यू क्योंकि एचयूएफ नेचुरल है और एचयूएफ में कोई डिटरमाइंड हिस्सा नहीं है, इसलिए विल के द्वारा एचयूएफ का शेयर नहीं दिया जाता। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। Anybody else? If anybody else want to ask something? So I can see one question in chat box. Can female be karta? Yes. Previously, female could not be karta, but female means who? The married daughters. Okay. The wife cannot be karta, but the married daughters can be karta if she is the senior one. I have already told in my deliberation. Okay. Can a person be karta of 2 HUF? Yes. Obviously, a person can be karta of 2 HUF. He can be karta of his parent HUF if he is the senior, if he is the eldest, or he can be karta of the smaller HUF of belonging to him, his wife and his son. So a man can be karta of 2 HUF. They know. I think, sir, there is no more questions, sir. So we can we end the session, sir? For sure. The time is also over. Already 6:50 there. Yes. Yes, sir. So just formal vote of thanks, sir. I thank on behalf of DTPA and all the participants to both the our speakers, Advocate SM Surana ji and Advocate Paras Kochar ji, for their wonderful deliberation. I am not only hopeful, but I am also confident that all the participants has benefited immensely from this webinar. Thank you, sir. And thank you all the participants for patient hearing. Thank you.